writing an introduction, how to connect the different lines of thought during writing the body part of an essay, and then how to uh, conclude the essay so that it provides a complete picture of the whole thought process that you have gone through in all those pages that you have written before. So I welcome you all to this orientation class, and we begin with the trends. In CSE 2016, the topics were like, if development is engendered, it is endangered. So there is this very interesting episode that I would like to tell you about this particular topic. When this topic came, different students or candidates took different meanings of engendered. That was quite different from what the dictionary meaning of engendered means. So UPSC had to give a clarification that students who have taken a judicious kind of reference towards this particular word will not be penalized. Otherwise, there was this risk कि engender मतलब ये तो gender से related होगा और उसके हिसाब से students wrote that essay. So that was very interesting kind of thing. But the gist part is that it is a kind of a conventional topic. Okay. Need brings greed. If greed increases, it spoils breed. So as you can see, this is not a conventional kind of a topic. Conventional in the sense, what I mean is something which is more pertinent to history, polity, geography, economics, maybe art and culture, science and tech, something like that, which you read often in your GS 1, 2, 3. What I mean by unconventional topic or abstract topic or kind of a philosophical topic is something, if that topic is an abstract statement, maybe a kind of an idea which is open-ended, then I would say that it is an abstract topic or a non-conventional kind of a topic, isn't it? So as you can see, need brings greed. If greed increases, it spoils breed. So it is a kind of an open-ended topic. And that is where the problem begins. And mind you, with the word problem, I would say it is rather a challenge and an opportunity to showcase your linguistic skills, your articulation of thoughts, and to create an impression upon the examiner. Because if, say, 100 copies are being checked by a person, and 80 people are writing on conventional and simple topics, and somebody who is writing on an abstract idea, definitely you would, that examiner would have a keen interest in seeing as to what this particular candidate has written. But with that, why did I call it a problem? Because it also confronts us with challenges. Challenges of covering up all the different aspects of this topic, of this open-ended, open-threaded kind of a topic. If you miss some critical components of this topic, maybe your idea would not be complete. So it's a kind of a double-edged sword, but we cannot do anything about it because UPSC has been asking these kinds of questions every now and then. So we have rather, we should be prepared to attempt these kinds of topics. So herein, need brings greed. If greed increases, it spoils breed. How would we, in our subsequent classes, deal with such kinds of topics? That is the way which I would briefly tell you. When this kind of a topic comes, the approach is a keyword approach. We have to find out what is the keyword. And then we have to delve into a kind of brainstorming, which I call a spider diagram. I'll be showing that in one of the slides later on during this presentation. How we can do the brainstorming before writing any single word in our copy or answer sheet. And after delving into that whole process, how
to write an introduction, body part, and the conclusion part of the essay. So herein, need brings greed. If greed increases, it spoils breed. So I'll tell you a very, you know, often asked question. लोग कहते हैं कि money is the root of all evil, isn't it? कहते हैं ना सब लोग कि पैसे से ही सारे जो evils हैं they come along. So that is, I believe, a misconception. It is money which is required to fulfill your needs, your desires, to provide proper education to your children, or even for your own selves. You know, by getting good food, healthy food, proper clothing, proper shelter, even for leisure. So money brings all these comforts to you. So how can it be evil? Isn't it? So it is not money which is evil. And you would be saying, कि sir, क्या आप पैसे की ही इतनी तारीफ करने लग गए? It is true. It is actually true. Money is not the root of all evil. The greed for money is. Okay. अभी recently एक बड़ा मीम भी चल रहा था जिसमें कि somebody who is kind of personality development trainer, he had come to a reality show there and he was doing some memes कि इसको करने से ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि नहीं, and he said होता है. So something like that. So I hope you get the point where I'm referring to. Anyways, my point is money is not the root of all evil. It is the greed for money which is the actual culprit. Okay, so better identify the root problem to come to a conclusion and resolve it. So need brings greed. So when we see this topic, what comes to our mind? Greed के बारे में तो हमने बात कर ली. Need के बारे में हमारे मन में क्या ख्याल आते हैं? What do we understand by need? Is the Maslow's need hierarchy. Physiological needs, social needs, coming up to the self-esteem and then self-actualization. So how do we connect that in our essay? That is to be seen here. Okay. If greed increases, it spoils breed. So obviously it's quite plain and simple. Water disputes between states in federal India. As you can see, it is a completely Lakshmikant kind of a topic coming from the polity. So herein, I would say it is a conventional kind of a topic. Innovation is the key determinant of economic growth and social welfare. So it is a kind of a broad-based topic, although a conventional one. And it talks about the economic growth vis-a-vis the social welfare. And to bring about that, how innovation is a key force, key factor in that. Isn't it? So out of these 4 topics, what did we see? One is the unconventional or an abstract kind of a topic in 2016, right? In section B, as we find, we'll just go quick. Okay. Cooperative federalism, conventional. Cyberspace and internet, conventional. Near jobless growth in India, unemployment and all, conventional. Digital economy, conventional. So out of all these 4 plus 4 topics, only one is an abstract idea, isn't it? But even here, the topics range from economic growth to the cooperative federalism to interstate disputes and all. This is a very interesting topic, cyberspace and all, because lots of development is taking place and lots of apprehensions also regarding the cyber fraud, cyber security and all is going on. And there are lots of fancy words, as we would be seeing in our subsequent discussions during the class. And some of these terms are echo chambers, like splinternet, like cyber apartheid, and lots more. So we will discuss all these kinds of topics, their implications and all. You will be surprised
that even philosophy also is associated with such kind of conventional topics. So what we will try to do is that we will try to incorporate the philosophical and the spiritual aspects with respect to a conventional topic also, so as to broaden its range, isn't it? So just for example, I remember Friedrich Nietzsche, one of the prime German philosophers, and he's kind of more abstract than other kinds of philosophers. So we will be talking about John Stuart Mill's, Jeremy Bentham, the utilitarians, as well as Immanuel Kant, the categorical moral imperative of Immanuel Kant, isn't it? John Rawls, we'll talk about distributive justice and all. And similarly, we'll also talk about classical philosophers such as Socrates, Aristotle, Plato, and all. But that depends upon the topic and its context that would be there in the upcoming classes. Okay. So herein, if I try to correlate one of the philosophers to the present times, so I'll just give you a situation. When your friend says, he puts a fact in front of you. He says that 33% of unicorns in India are owned by females. So would you believe him or her? There is a chance that probably you won't, because you would have this curiosity to Google it up, to ask maybe your friend or whatever, but you will not blindly accept what your friend is saying. It is because you have an analytical mind, you have critical thinking, you just cannot believe in all the statistics. As per a statistics by a US research firm, 67.67% of statistics are made up, including this one. The point is that what you believe is based upon your past experience, your knowledge, and your curiosity to delve into the truth. And that is what is the scientific inquiry of mind. And that is what Immanuel Kant, as a philosopher, had spoken about when he talked about an autonomous being who acts according to a law that he gives onto himself. So we will talk about that. Okay. So Immanuel Kant is one who can be correlated to this topic. The second aspect is what I was referring to is Friedrich Nietzsche. You remember him with his staunch moustache. And what did he say? That he referred to a phenomena which is known as post-truth world, which we often come across these days. Even the US presidential election in 2016, which Mr. Donald Trump won, it was alleged that it was because of the post-truth world phenomena which led to his victory. So what is this post-truth world? It is, in simple terms, a phenomena wherein you do not go with the scientific inquiry on a particular question, but believe based upon your feelings and hearsay. Supposingly, your mother tells you, do not talk to this person. You will automatically believe her that she is saying the right thing, because you know that she is your well-wisher, because there you will not apply your scientific inquiry of mind. That is because you believe in the feelings. But think of, say, an unscrupulous politician who incites
the public by giving false statements in a hate speech, and people become infuriated, they become agitated, and what they do, they go on a rampage. You saw all these incidents of Agniveer scheme and the East Delhi riots a few years back and all. What are these aspects? It is because people randomly and blindly believe their leaders. So on one hand, feelings, they do matter, like what your mother says, but then at the other hand, it also has its repercussions, as a politician is saying, the hate speech. So when people, the masses, believe in what they see, they hear from a popular person, that is not based on the scientific inquiry. अभी शाहरुख खान या फलाना ढिमकाना कोई एक्टर आपके सामने कोई प्रोडक्ट प्रमोट करे, तो उसकी एक अलग इमेज होती है. तो आप यू आइडेंटिफाई दैट प्रोडक्ट नॉट विद द ब्रांड ऑफ द प्रोडक्ट बट विद द famous actor, isn't it? So that gives a brand value and that appeals to the mind. So that is also a kind of a post-truth world phenomenon. So what is happening and how I connect it to cyberspace? Because whatever we are reading on internet, on social media platforms, once we click a particular page, then 10 more pages pop up. What it does is it acts as an echo chamber, as if you are in a chamber and your own thoughts are echoing. So they are augmented, they are intensified, and your thinking becomes fundamentalist. If you are a centrist, maybe you would turn into a rightist or a leftist. Maybe there can be propaganda against a religion or a caste. So you see polarization in society based upon what they see, what they write, what they do on social media platforms, isn't it? So all these aspects of post-truth world, which Friedrich Nietzsche had propounded in a certain way, can be correlated to this aspect. So the point is that even though it is a conventional topic, we can connect Immanuel Kant and Friedrich Nietzsche to this topic. And like this, different topics can be discussed. Near jobless growth, obviously we had discussed. So let's go to the next year, 2017. What happened? भारत में अधिकतर कृषकों के लिए कृषि जीवन निर्वाह का एक सक्षम स्रोत नहीं रही है. Farming has lost its ability to be a source of subsistence for majority of farmers in India. Farmer suicide, agrarian crisis. You saw the farmer protest. 47% of India's labor force is engaged in agriculture, farming, and allied activities. So this kind of a topic is a broad-based conventional topic. Lots of aspects associated with it. National agricultural market, farm mechanization, extension services, credit facilities, insurance, forward and backward linkages, farm infrastructure, market access, lots of aspects, value addition, food processing. All these aspects are related to this topic. So here the keyword is farming. So here I would like to draw your attention towards the difference between agriculture and farming. The first question is, what is agriculture? And what people would write, they would write about crops, multi-cropping, integrated water management, integrated crop management, etc. So what they do is they basically focus upon farming, which is only one of the parts of agriculture. Those who have geography optional would appreciate that agricultural geography itself is one of the topics, wherein it delves into not only the farming aspect but also the agricultural allied activities, silviculture, sericulture, pisciculture, apiculture, and whatnot. So agriculture, animal husbandry,
all these different kinds of allied activities, they all combine together to form this word which is known as agriculture. So although this topic is on farming, you would definitely write more upon this topic had you been writing this topic in your essay, but you would also like to draw the attention of the examiner towards the agriculture aspect to showcase that yes, you know what is the difference between the two terms. So it has lost its ability to be a source of subsistence. So when you attend this kind of a topic, what is the prerequisite tool that you must have? And if I say it is the statistics, you should not be surprised. Because you can only prove that it has lost its ability to be a source of subsistence when you have adequate data and excerpts from the reports. Say, for example, as per NCRB data, and mind you, all these stats are not made up. It's not a post-truth thing that I'm telling you. As per NCRB data, 7.4% of all the suicides occurring in India in 2021 were because of agrarian crisis. Okay. Then 80% of the farmers in India are small and marginal farmers. That is less than 2 hectares of land holdings. Okay. So similar kind of statistics are available regarding the insurance penetration, which is just 6.3% in agriculture sector. Okay. So you have to prove that based upon certain statistics. That is one aspect. When you further delve into this topic, the question comes whether you support this argument or not. So these kinds of topics give an argumentative kind of feeling. So herein, the essay demands that you analyze this topic critically. That means, yes, I agree with this topic, XYZ. Then, no, yes, there have been problems, challenges, but it has still not lost its whole charm. Then you can give the examples of the entrepreneurs, having degrees from sophisticated degrees from elite colleges and doing organic farming in Gurugram and all these aspects and earning in lakhs and crores. Then you can give examples of people across India who have been mixing crops, like one of the farmers who is from Saharanpur. There was this, article in Yojana a few months back, wherein he had focused upon farming along with fruit cultivation. So rather than sugarcane. So what happened? Sugarcane takes a lot of time, lots of water and all. And this fruit crop was throughout the year, and that helped him fetch more money from his fields. So this kind of a topic requires these two approaches. One, the statistical approach. The second one, the argumentative or the discussion kind of a pro or cons, whether you agree or you do not agree with this kind of a topic. And how do you do that? Through spider diagrams, through brainstorming. And what is that? Subsequent slides. So stay tuned. भारत में संघ और राज्यों के बीच राजकोषीय संबंधों पर नए आर्थिक उपायों का प्रभाव. Impact of new economic measures on fiscal ties between the union and states in India. Okay, so it is about the fiscal relationships, state, center, and all these aspects. So herein you should know the tax regimes, what are the different aspects with respect to the new economic measures which have been taken up with regards to the devolution of proceeds of taxes as per the Finance Commission, and what are still the hiccups, whether the states have been adequately compensated or not, what are the provisions in the Constitution, India, and all these aspects. So more of a kind of delving into the political and economic aspects. Destiny of a nation is shaped by in its classrooms. So no gainsaying, an abstract topic, isn't it? So destiny of a nation is shaped in its classrooms. So herein, although it looks as if it is an abstract topic, it is actually a topic regarding education. And that too, education at different levels. The
preschool education, the scholastic education, okay, and then what is there in the universities and all, postdoctoral and all. So then the quality of teachers, people, pupil teacher ratio, the infrastructure facilities, the industry college relationships or interactions. Then only 18% of the engineering graduates coming out of engineering colleges every year are employable. It is one of the findings which was also iterated by the Metro Man of India, Dr. E. Sridharan, during one of his interviews to Indian Express a few years ago. So what happens is, कई बार बीच में ये भी एक कहानी चली थी पकौड़ा तलने वाली बात, कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, क्या करें, पकौड़ा तलें. तो वहां पर ये मीम बन गया था, इट वाज अ ट्रेंड, इट वाज लाइक ट्रोलिंग. बट द प्रॉब्लम इज दैट दोज who are coming out of the colleges, many of them, I would not say all, but many of them had this serious issue of employability skills. And that is one of the very big factors in the rising unemployment in our country. So that aspect has to be delved into. The further aspect is regarding the skill. कितने लोग हैं जो मैकेनिक बनने का सर्टिफिकेशन लेना खुशी से पसंद करेंगे? सब बीए, बीएससी वगैरह करना तो पसंद करेंगे, लेकिन कोई वोकेशनल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट लेना नहीं पसंद करेगा. तो हमारे यहाँ पर इन इंडिया वी हैव लाइक 3%. और जो मैं स्टैट्स आपको बता रहा हूँ, what we do is we make a glossary, we make a compendium of all the statistics that we come across and use them as our tools to, use them in our GS answers as well as in essays. तो भारत में 3.3% के आसपास people have vocational training, and only 1% of them have some kind of a certification regarding a vocational training, as compared to more than 70% in the Asian tiger countries, South Korea, Taiwan, Japan and all. See the stark difference. One of my friends who is in national high speed, that is the bullet train, says that he is being trained for 6 years. His training, he is into now his second year, and he will be trained for 6 long years for the operations and maintenance of bullet train. And for that, he is also being imparted the training in Japanese language and all the quality assurances aspects and all. So that is the level of input, training, skilling which is required, which is kind of a food for the manufacturing sector. And now in this Make in India and all these aspects, and to make India a manufacturing hub, skill is one of the prime most aspects. So herein we can talk about Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, Skill India Mission and all these aspects, and even Udan scheme, not Ude Desh Ka Aam Nagrik, that different Udan scheme and all. So there are different kinds of schemes the government is providing. And then we can also talk about skilling, reskilling and upskilling. As an example, I would say it is about, say, a person who used to run a PCO booth. आजकल PCO booth कितने दिखते होंगे? Hardly. लेकिन पहले 2004 के आसपास, 6 के आसपास, when there were lots of phone booths, क्योंकि उस समय STD वगैरह लोगों के पास फ़ोन उतने नहीं थे, कम थे, नए नए फ़ोन्स आए हुए थे, महंगे भी थे, तो PCO बूथ काफ़ी चलते थे, साइबर कैफ़े काफ़ी चलते थे. आज देख लीजिए, तो उन स्किल वाले लोगों का क्या हुआ? उन्होंने कोई नया धंधा पकड़ा, कोई नया काम पकड़ा. मोबाइल फ़ोन को रिचार्ज करने के लिए भी पहले वो रिचार्ज कूपन्स आते थे, है ना, उसको कॉइन से स्क्रब करना पड़ता था, कोड मिलता था, कोड एंटर करना पड़ता था, तब जा कर के रिचार्ज होता था. तो फिर PCO बूथ वालों ने ये काम शुरू किया, भाई कूपन बेचेंगे. धीरे धीरे उन्होंने अपने सारे टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को चेंज किया, कुछ और नया काम किया होगा. उसी तरह से पहले CD प्लेयर्स, ये पहले VCR चलते थे, बड़े बड़े कैसेट्स होते थे, उससे मूवी देखते थे. उनको रिपेयर करने वाले
क्या हुआ, वो टेक्नोलॉजी गई, फिर सीडीज आ गई, डीवीडीज आ गई, अभी तो फिर डीवीडी भी शायद ही कोई यूज़ करता है, अभी तो इंटरनेट से ही डाउनलोड कर लिया, 5G आ गया है. तो व्हाट आई मीन टू से इज दैट विद टाइम skills required to be refreshed, reskilling is required. Similarly, people who do BTech and all, what they do is MBA कर लेते हैं. क्यों? Upskilling. टेक्नोक्रेटिक नॉलेज भी है, मैनेजरियल नॉलेज भी आ गई, कंप्लीट पैकेज. ठीक है, कंपनीज लव टू हायर दोज गाइज. तो रीस्किलिंग, अपस्किलिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. सो डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज शेप्ड इन इट्स क्लासरूम्स. तो यहां पर जब हम क्लासरूम की बात कर रहे हैं, तो क्लासरूम को हम सिर्फ फिजिकल क्लासरूम की तरह न देखें, हम इसको एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट में देखें. क्लासरूम मतलब ऐसे के लिए, if you're writing a GS answer, obviously a classroom would be a kind of this kind of a setup. But when we write an essay, we take a broader meaning. We consider our own mind as one of the classrooms for newer thoughts. That is an abstract idea. Okay, wherein the values are imbibed, different thoughts come in and people behave accordingly. So that kind of a picture is also to be created. So the destiny of a nation is shaped in its classrooms. We will focus upon the educational aspect, educational sector, what are the different models in different states, the new education policy and all, we can talk about that. And then we have to take a cue from the different countries and what their different models of education are: free education, value education, happiness curriculum. Okay, so all these aspects can be discussed and how they help in creating the destiny, because ultimately it leads into making a good citizen, okay, an informed citizen, one who is, as there is a quote, a mind once enlightened doesn't become dark. So with this quote also we can further elaborate and accentuate our idea, isn't it? So this was this. Has the non-alignment movement lost its relevance in a multipolar world? Although this is a topic in 2017, but don't you think it is quite relevant even today, especially in this Russo-Ukrainian war and with respect to what the stand India has taken? Similarly, the relationship of India regarding the dehyphenation of relationships with respect to Israel and Palestine. So a kind of non-alignment, neo-non-alignment, I would say. So that aspect. So herein you should also have some knowledge of the historical aspects, how it, that post this Cold War and all, and how this non-alignment movement came into being, what were its different aspects. So that is one aspect. You must see here a very important term, which is a multipolar world. So here it debunks this concept of a unipolar world. During the Cold War, it was a bipolar world. USA on one hand and USSR, or the Soviet on the other. After this dismemberment of USSR in 1991 into 15 different independent nation states, there was a certain dominance of America, US. And it was said that after this bipolar world, it is now a unipolar world having the hegemony of USA. So, but what is happening now? The situation has rather changed into a multipolar world. So the different dynamics of Indo-Pacific, the bilateral treaties, the voice of small littoral countries, so all these aspects of diplomacy, foreign relationships, together with the terms and terminologies, help you in writing this kind of an essay. So what happens in that curiosity to write an essay on non-alignment movement, we forget a very important aspect, which is a multipolar world. So we have to justify that, yes, this is a multipolar world.
and then go along and say how this non-aligned movement in its newer avatar can help in resolving different issues, because it provides a neutral ground to two disputing nation states and come out with an amicable solution. This can be useful in resolving border disputes or even the cultural aspects, cultural issues, you know, like we can see there in Turkey regarding the Kurdish rebels. Similarly, in Yemen regarding the Houthi rebels. Okay, so cultural, ethno-religious issues can also be resolved by parties who are non-aligned, who are kind of neutral. And if you ask me a question as to how we can connect a spiritual angle to non-aligned movement, I would say Buddhism and the Madhyam Marg. Can you find out this correlation between non-aligned movement and the Madhyam Marg, or the golden mean, or the Goldilocks zone, I would say? So that gives a spiritual angle even to such a serious topic of, and I'm not saying that spirituality is not serious, very serious, but a conventional topic delving more into the diplomacy aspect, right? So I hope we are going through this discussion with an open mind as to how we have to interpret different topics. And that is exactly my agenda for today's discussion in its orientation class, to confront you with different varying thoughts which come across our minds when we see different topics. And that helps us in choosing what are our strengths and on which topic can we write our essay, and how to hone different skills in that. Correct? Okay. Then the section B, the first topic is joy is the simplest form of gratitude. As you can see, it is an open-ended topic. It is a non-conventional abstract topic. तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि joy होता क्या है. What is joy? In the simplest form of gratitude. If I say happiness, pleasure, joy, ecstasy, bliss, so all these meanings have some synonymous aspects with respect to eudaimonia. You know, the ancient Greek conceptualization of happiness, eudaimonia. But all these terms have different meanings. So we must know what joy is. So what is joy? किसी joy का मतलब joy और happiness में क्या अंतर हो सकता है? When you succeed in an examination, can you say your father or mother they are blessed? No. You can say they are in joy? No. They are glad? Yes. Are they happy? Of course. So the correct word here is happy. Your parents feel happy when they find that their child has succeeded in his or her dream, which has been turned into a reality. So, and you would say कि सर आप तो बाल की खाल निकाल रहे हैं कि इसमें happy, joy ये सब क्या है? ये तो एक ही चीज़ है, happiness से है, but there is a difference. And there is rather a pyramid regarding that. Joy is something which you find on the face of a child, a kid, when you give him or her a chocolate. You see the happiness, the joy, the ecstasy, that is precisely joy. And you must have realized whenever I'm referring to a child, a person, I'm rather using gender neutral terms, that she has done it. Okay, the chairperson and all these aspects. So that is also one of the nuanced approaches in writing an essay. That slide is coming up. So then there is
bliss, which is one of the highest forms of happiness. It is related to a godly sense of happiness, something which you feel when you help somebody, when he or she is in dire need of your help. So that is a bliss. जब भी कोई नवयुगल है, कोई किसी की शादी हुई हो, तो हम क्या कहते हैं? हैव अ ब्लिसफुल मैरिड लाइफ. हैप्पी भी लिख देते हैं, लेकिन अगर टर्म्स की ही बात करें, सही टर्म की बात करें, तो हम क्या लिखना पसंद करते हैं? हम लिखना पसंद करते हैं हैव अ ब्लिसफुल मैरिड लाइफ. ओके, समथिंग विच इज गॉडली. सो जॉय इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्रेटिट्यूड. तो उसी लाइन पे हम आगे बढ़ेंगे. फुलफिलमेंट ऑफ न्यू वुमन इन इंडिया इज अ मिथ. भारत में नए युग की नारी की परिपूर्णता एक मिथक है. अब देखिए, ये एक नेगेटिव काइंड ऑफ अ सेंटेंस दिखता है. तो जरूरी नहीं कि जो लिखा हुआ है आप उसको एक्सेप्ट करें. यू कैन refute this argument, give your arguments against this aspect, then try to give some challenges to that refuting argument. Say that no, it is actually true, but this argument has these flaws, and then go on and explain what you believe. Okay, so this is a different kind of a topic in that sense. Sorry. हम मानवीय नियमों को का तो साहसपूर्वक सामना कर सकते हैं, परंतु प्राकृतिक नियमों का विरोध या प्रतिरोध नहीं कर सकते. वी मे ब्रेव ह्यूमन लॉज बट कैन नॉट रेजिस्ट नेचुरल लॉज. सो कैन यू फील दैट tinge of disaster management aspect in it? That is what needs to be discussed here, especially in this episode of Joshimat, which we are reading in the newspapers these days. Okay. अब यहां पर भी अगर हम फिलॉसफी की बात करें तो क्या करें, कैसे करें? तो इसमें पर्सपेक्टिव्स इन ज्योग्राफी की कुछ फिलॉसफीज हैं जो यूज की जा सकती हैं, जैसे डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म, फ्रेडरिक रैटजेल, विडाल डी ला ब्लाश, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, एफ.आई. टेलर. तो ये सब कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो इस टॉपिक में यूज किए जा सकते हैं. वी कैन यूज दीज टॉपिक्स, दीज फिलोसोफर्स concepts here. Okay. Social media is inherently a selfish medium. We have already talked a little about social media, the echo chamber and all, cyberbullying, then the episodes of, people using social media for all the wrong reasons. But then also, one of the positive aspects for a country as big as India, direct democracy has to a certain extent been possible because of social media, isn't it? And you tweet something to the railway minister, you have lost a bag, and then you get a reply. What is that? Somebody who's stuck up in a war-raged country and the external affairs minister replies to your tweet. What is that? Isn't it a kind of a direct democracy which is possible because of social media? It is. So this aspect can be discussed. Alternative technologies for a climate change resilient India. Very interesting topic. Because it doesn't talk about climate change as such in an essay, but the alternate technologies is the focus here. So you have to talk about the different aspects of clean development mechanism, technology transfer, carbon credits. Okay. Then the renewable energy, the different potential energy and non-conventional energy resources and all, which can help in a climate change resilient India. So this topic is particularly about India. Okay, but it doesn't mean that you do not talk about different other countries. You have to give a reference towards them, but the focus should be here, and that should be climate resilient India. Okay. So anyways, a good life is one inspired by love and guided by knowledge. An abstract topic. So here, the values, the upbringing, the morality aspect,
ethics aspect, they come into being. And a good life is inspired by love, because with love you get that energy, that power, which transcends the human strength and capacity, isn't it? It is a love which can bring a person from the deathbed to her legs. It is said that medical science can only help in treating the disease, but to make that person well, it is the blessings and the love which is required along with the medical care. So, what are the different aspects of a good life? Is it just getting all the materialistic pleasures that you have? Or is it having good friends? So, I remember on one of my family WhatsApp groups, there was this question out of 6 different aspects, namely health, hope, wealth, family, friends, peace, and good sleep, something like that. Which is the most important aspect which one cannot live without? So then lots of the cousins, the second cousins and all, some favored wealth, some favored health, some favored something else and all. So they had different experiences in their life. Maybe somebody in the family uh, was not well, had passed away because of poor health. So they considered health as the prime most aspect. Some believed that wealth is important, because that discussion we already have. What I believed was hope, because it is hope which creates, which converts opportunities into reality. We all are, you know, we all are victorious until we feel that we have been defeated. मन के हारे हार है, मन के जीते जीत. Those, एक मूवी भी आपने देखी होगी, रॉकी मूवी में भी कहता है कि the protagonist tells his son, it is not how hard you can hit, but how hard you can get hit and still keep moving forward. Courage is not something which is not falling down. It is the ability to get up every time you fall down. So it is hope which helps a person get up to his or her feet and keep moving forward. Persistence comes from hope. If you do not have any hope in life, people become desperate, and it has a psychosomatic aspect on their lives. And that is why hope, I believe, is one of the most important aspects in life. Hope creates wealth. Hope helps in convalescing. Hope helps one keep good health. Although some aspects of health may not be in your hands, but at least you can try it. So the categorical moral imperative of Immanuel Kant, that is, focus on the work and not the end results. Karmanyevadikaraste ma phaleshu kadachana ma karma phal heturvurvate sangosatu karmani. So a good life is one inspired by love and guided by knowledge. So love has that kind of a strength. And so the different aspects of life, the 6 parameters that we discussed, the different qualities which one must have in life needs to be mentioned here. And it is something which is guided by knowledge. If you are not guided by knowledge and you act erratically, the chances are that you would be committing a mistake sometime in your life. Maybe with respect to
a career, maybe choosing a partner, maybe uh, doing some business, maybe in your professional life. So it is the wisdom, the knowledge, which helps one avoid a particular issue before it becomes an emergency and to lead a good life. So in that aspect, we can talk about. Poverty anywhere is a threat to prosperity everywhere. A very famous quote. So herein we have to talk about poverty. So the point is, for poverty, it is not having empty pockets. It's not the money which alone defines what poverty is. A corrupt official taking bribes under the table is also a poor person. You would be laughing कि सर आज तो सारे मीम्स वाली ही बातें हो रही हैं. But he's actually morally corrupt, morally poor. People committing heinous crime against women, young girls, you know, harassing them over internet and all, leading them to take their own lives. A very unfortunate incident of acid attack, I think a month ago. So all these aspects are what? Because people who commit these heinous crimes, they do not have respect for somebody else's life. And they are morally poor. So poverty in that sense. Poverty can also be correlated to poor health, poor education, poor values, poor culture, a society which delves into the blind customs, leading people to be constrained to superstitions. They are also poor, isn't it? So, and with such kinds of customs, I am reminded of a short story, The Lottery. Okay, just to come out of this moribund discussion. The Lottery is a short story by, I think, Shirley Jackson. So in that story, there is this quaint village wherein every year there is a lottery. And every single person in that village, every village folk, is absolutely serious about that lottery. So this Mr. Greens is one who runs this lottery. And the head of the family is supposed to take out a chit which has a black dot on the back, which states that you have won the lottery. And only that head of the family is supposed to take that chit out from every single family, no exceptions. And it is keenly looked into. So this story is through the eyes of the protagonist, Mr. Hutchinson, wherein he has won the lottery. And he's very sad. And do you know why? Because winning this lottery means that this person would be stoned to death as a means of a sacrifice for bringing good omen to the people of that village. And this story then goes on and delves into the trials and tribulations of the person who has actually won the lottery, depicts what
blind customs can do to an individual's life and to the whole civilization. So such kinds of societies which are superstitious, which delve into the aspects of inhumane practices, whether it is uh, human sacrifice, whether it is during the earlier times, sati, or maybe not providing education, what we are seeing in the present dispensation of Taliban in Afghanistan. So these civilizations perish because they are inherently poor. So that kind of poverty can also be talked about here. So do you correlate what is going on in Taliban? That kind of a poverty is a threat to prosperity everywhere. So this kind of a broad meaning can also be taken. It doesn't mean that you have to write this whole story of the lottery. It was just to apprise you. You can just write one sentence that a short story, The Lottery by Shirley Jackson, depicts this disease. Okay. So in one line, you can give a literary reference in your essay also, which can be very beneficial. Management of Indian border disputes, a complex task. So here, border management, confidence building measures, track 1, 1.5, track 2 discussions, uh, using technologies for border management, smart fencing, CCTV cameras, deployment of security personnel, intelligence, the role of local people. All these aspects come together together with the historical examples wherein we can talk about the management of Indian border disputes and how it is a complex task given the challenges because of the different or difficult terrain, because of lack of proper border infrastructure, because of the seismicity, because of the harsh conditions, climatic conditions. So the geology, the climatology, the demography, the civil infrastructure, all these aspects come together with state-sponsored anti-social elements, the proxy wars. So the illicit money, the counterfeit money, the drug trade. So all these aspects come together when we talk about the border disputes. So you can also give a historical insight as to why these border issues prevail with respect to the border between India and China, between India and Pakistan. So uh, even the historical aspects with respect to what is the root of the issue because of the different interpretations of the LAC or LOC. Okay. So, and how can it be resolved? So it needs a practical, pragmatic aspect. And therein you can delve into this NAM aspect and non-aligned movement in the present times, the strengthening of UNSC and UNGA. Okay. The role of uh, bilateral or multilateral security pact, the Indo-Pacific aspect. Okay. So these different cooperation agreements, pacts are also one of the aspects which require to be discussed here. All right. Then comes, अभी भी हम 2018 पे ही हैं, तो देखिए हर एक टॉपिक के लिए किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं. तो we'll rather now hurry up. Okay. Customary morality cannot be a guide to a modern life. So it talks about morality. What is morality?
The difference between right and wrong is morality. But it is different from ethics. Ethics is something which is an active adherence to morality. What is that? Later on in the classes. The past is a permanent dimension of human consciousness and values. You see, now the trend is tilting towards the unconventional topics. A people that values its privileges above its principles loses both. So herein, the principles, the values are of prime most importance. So it's about responsibilities, duties and rights, the values. So it talks about that. Reality does not conform to the ideal but confirms it. Again, an abstract topic. 2019, wisdom finds truth. So the question is, what is wisdom? How is it different from knowledge? How is it different from cleverness? How is it different from intelligence? Isn't it? So wisdom is a sum total of knowledge, experience, nuanced thinking, and balance of mind. That is wisdom. Truth. So we have to delve into the various aspects of truth. So wisdom finds truth. So completely abstract topic, isn't it? Values are not what humanity is, but what humanity ought to be. It is a concept of positivism in philosophy. Auguste Comte. So the positivistic thought, what humanity is, what humanity ought to be. Okay, so देखिए एक छोटा सा एस्पेक्ट बताते हैं. What humanity is. What is means there are two aspects. What is and what ought to be. क्या है और क्या होना चाहिए. क्या होना चाहिए. What ought to be. It means something which has a presupposed principles which are to be followed. क्या होना चाहिए. What ought to be the dimensions of beauty. So we have a preset conditions. Physical fitness, color, facial features. So they differ in different civilizations. So it is a value-laden term. What ought to be. And what is something which is a positivistic aspect. क्या है. So when we say truth, अभी हम पीछे के टॉपिक में ट्रूथ पढ़ रहे थे. What is truth? Is it a value-laden term or is it an absolutist term? So I would say, please refer Friedrich Nietzsche. And a short example, how he has described this aspect is, जैसे when we see this device, okay, it's a remote. So when I ask somebody, what is this? She would say, it's a remote. Why? Because I have attributed a word remote to this particular device. Isn't it? Nobody would say it is a pen, because they know that the word pen has been ascribed to this product. Okay? What I mean is a certain characteristics. Based upon certain characteristics, a particular term has been ascribed to a particular object. Similarly, when we see a dog, we say, look, there goes a dog. Do we say, no, it's a cat? No, because we have ascribed the word cat to a different mammal and dog to a different mammal. Correct? Similarly, it is about truth. कैसे? Because we define what is truth. It is a value-laden aspect. So Friedrich Nietzsche talks about truth being a value-laden term. He says that he has an apple in his hand. Okay. And he calls it an object. He quietly goes behind a bush, puts the apple there, and vanishes.
The next day, he comes as if he didn't know what he did yesterday, came strolling, walking all around, and then unwittingly goes behind the bush, finds that object is uh, placed there, picks it up and says, "See, I found an apple." So, what does it mean? It means that first he himself defined what truth is and then discovered it. So he ascribed certain truth, certain aspect to certain property to a phenomena and then described it accordingly. So that is why it is a value laden term. Okay. Similarly, justice. So justice for one cannot be justice for the other. It is also a value laden term. Justice in one society cannot be justice in some other society. Maybe in Nordic countries, capital punishment is completely abolished, but not in India. For heinous crimes, yes, capital punishment is still available, but although it is rare, but for them, it is not justice. For us, it is justice, a kind of a retributive justice, isn't it? So, best for an individual is not necessarily best for the society. Okay, plain and simple. Courage to accept and dedication to improve are two keys to success. Plain and simple, courage we talked about. So, we can see abstract topics here. पहले क्या हो रहा था? Conventional topics पे चल रहे थे. South Asian societies are woven not around the state but around their plural cultures and plural identities. Culture के बारे में इसमें बताना है. ठीक है? तो ये कह सकते हैं, ठीक है, conventional topic आ गया. Neglect of primary health care and education, conventional. Biased media is a real threat to Indian democracy, conventional. Artificial intelligence, conventional. ठीक है, तो एक सेक्शन में conventional, एक में abstract. लेकिन इसमें भी तो एक ऐसे लिखना ही है ना, इसमें भी एक लिखना है, इसमें तो सारे ही वही दे दिए. तो क्या हुआ? ट्रेंड अब आपको मजबूर कर रहा है कि आप इस तरह के टॉपिक्स में लिखिए, भाग नहीं सकते. We have to write, okay? So, and rather we have to equip ourselves in writing both the kinds of essays. That is what it means. So life is a long journey between human being and being human. Okay? So empathy, compassion, the foundational values, morality, ethics. Okay? So that aspect. So herein, there is a difference between empathy and compassion. There is a difference between sympathy and pity also. I feel pity when I find somebody in a desperate condition, dilapidated condition. I feel sympathy for her or him when I find that such a poor fellow is living such dreadful days in penury, in absolute poverty. I empathize with him when I put on his shoes, when I see myself in that situation and I see how difficult it must have been in that situation. I empathize. But I offer my compassion towards that person when I not only empathize with him, that is, when I not only feel what he feels, but also do something, extend my help to ameliorate his situation. That means there is a hierarchy: pity, sympathy, empathy, compassion. So that aspect is correlated to being humane. It's not about feeling bad for the country. It is the time to come out and do something. Okay? Words and not action will not lead us to anywhere. Mindful manifesto is the catalyst to a tranquil self.
विचार परक संकल्प स्वयं के शांत चित्त होने का उत्प्रेरक है. Okay, again an abstract topic. So herein we have to talk about the resolve, the manifesto that we take in our minds, and only then we can take up some action. And tranquil means at peace. Okay, so we can only be calm and composed and at peace with our own self if we have a mindful manifesto. Okay, ships do not sink because of water around them. Ships sink because of water that gets into them. That means the internal threats. Here, ship is not just a vessel sailing on the rough waters. Ship can be an individual, a family, a society, a community, a nation, or the whole world as such. Like, we ourselves are to be blamed for the increase in climate change, which is turning into climate catastrophe because of incessant burning of fossil fuels and a reckless lifestyle that we are living. What is happening? We are onto this ship, which is this whole world, and we ourselves are responsible for sinking it. It is not the external agency, that is not the natural phenomena which occur on their own, which is responsible for the extreme weather events which are now so frequently occurring, but because of our own selves that we are responsible for these rise in seawater and all the locusts and all the ablation of glaciers and all these aspects that we are seeing in our world. So here the ship means the whole world. You cannot have plan B because you cannot have planet. You do not have planet B, isn't it? And it is also said that we are rather sleepwalking into climate emergency. So that aspect is one of the aspects. Similarly, it is about the family. A ship can be a family. Water represents, on one hand, it's around them, the external surroundings. When it gets into them, getting into of the water means trouble, because now the ship will sink. So metaphorical aspect is to be discussed here. Simplicity is the ultimate sophistication. Often heard, less deliberated upon topic. So herein, how simple life can help. What is sophistication? It was actually, sophist means somebody who is mindful, who is thoughtful. Sophist movement चले थे medieval यूरोप में, वहीं से sophistication word आया. उसका अब मीनिंग चेंज होते होते सोफिस्टिकेशन का मतलब आ गया समथिंग विच इज adhering to a certain set of norms. Sophistication, earlier it was mostly about the mind. Okay, culture is what we are, civilization is what we have. Okay, plain and simple. There can be no social justice without economic prosperity, but economic prosperity without social justice is meaningless. So यहाँ पे हमें सोशल जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, इन सब चीज़ों की बात करनी है. जॉन रॉल्स का कॉन्सेप्ट, वेल ऑफ इग्नोरेंस का कॉन्सेप्ट अगर फिलॉसफी में बात करनी है. यूटिलिटेरियनिज्म, कैटेगोरिकल मॉरल इंपेरेटिव, इंडिविजुअल राइट्स, इन सब के एस्पेक्ट्स की, इमैनुअल कांट, इन सब की बात कर सकते हैं इसमें. पेट्रियार्की इज द लीस्ट नोटिस्ड yet the most significant structure of social inequality. A topic straight from the books of sociology, isn't it? Technology as the silent factor in international relations. Very interesting topic, but it needs a lot of deliberation. So how technology can be helpful in international relations. Okay, so technology in the sense of military technology, cybersecurity technology, even the technology in the farm sector, manufacturing sector, clean development mechanism, all. So how it correlates with the international relations is the point to ponder upon. 2021, we are near, very near. The process of self-discovery has now been technologically outsourced. Okay? The process of self-discovery. Self-discovery can be through self-contemplation, self-realization, introspection, learning from the lives of other people, great personalities, reading
and taking a cue from the lives of others. So the process of self-discovery has now been technologically outsourced. अब हम कैसे सेल्फ डिस्कवरी करते हैं? इंटरनेट पे पढ़ लिया, अच्छा डिप्रेशन हो ये दवा खा लेनी चाहिए, अच्छा फिर उसके बाद हम मोटिवेशनल थॉट्स वहाँ से पढ़ने की कोशिश करते हैं. टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है. लेकिन रिलेशंस में गड़बड़ हो गया, अच्छा लॉयर कैसे हायर करें. द पॉइंट इज दैट वी सीक सोल्यूशन फ्रॉम टेक्नोलॉजी rather than introspection. So, one of the aspects of this topic. Your perception of me is a reflection of you. My reaction to you is an awareness of me. इसमें बड़ा एक अच्छा आपको मैं बताता हूँ इंसिडेंट. तो I read somewhere there is this young college going student who was traveling in this DTC bus, and what happens is a man in his 40s starts shouting, अरे किसी ने पर्स चोरी कर लिया, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, किसी ने पर्स चोरी कर लिया. So what everybody starts looking helter skelter. क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया भाई. पहले तो लोगों को समझ ही नहीं आया कि कौन चिल्ला रहा है, क्या हो गया, कोई गिर तो नहीं गया बस से, क्या हो गया. तो पता चला नहीं किसी की जेब काट ली है, किसी का पर्स चोरी हो गया. तो and then this man in his 40s caught hold of this young 23 years old college going student. उसका हाथ पकड़ लिया because he was just putting his hand like this in his pocket. तू नहीं पकड़ा है, तू नहीं चोरी किया, तू नहीं चोरी किया. And people without thinking start beating up that young kid. Okay. And he doesn't say a word. Then one of his friends who was at the rear seat came, pushing others aside and rescues him and says, अरे तुमने बताया क्यों नहीं, तुमने कुछ नहीं किया. And then this man also comes forward and says कि नहीं नहीं अरे चोरी नहीं किया, वो मेरे दूसरे वाले बैग में पड़ा था. And everybody starts कि यार तुम लोग तो अपना देखते नहीं हो और बेचारे को इसको बिठवा दिया तुमने. तो फिर ये this man goes to this young boy, apologizes, and and his friend asked, अरे तुमने जब नहीं किया था तो तुमने बोला क्यों नहीं. तो उसने ये कहा कि this man, these people, they know me only for the past 5 minutes. I know myself for the past 20 some years since I have gained consciousness. So the point is, you know yourself better. People make opinion about yourselves. Although it was in his right to, defend himself, which he must have done, but he forgave that man because he said that you are public, you are the mob. The mentality is of mob mentality, which quickly discriminates, has prejudice against others, and doesn't look into the truth. All a person or a mob needs is a scapegoat, and today it was me. So I have no regrets that you blamed me, because it is what your values are, and it is my values to defend myself, and that is why I forgive you. है तो ये काफ़ी मोरालिटी वाली बात, रियल लाइफ में हो सकता है न भी हो सकता है जिस पे गुस्सा किया हो वो कभी उसको माफ़ ना करे. But it is because we are slave to our emotions. But the point is, the moral high ground is that your perception of me is a reflection of you. Okay? You perceive me as if it is a reflection of you. My reaction to you, based upon your perception, is an awareness of me. I know what I am. इस पे भी और भी बात कर सकते हैं. परसेप्शन का भी बहुत एक चेन है, एक क्रोनोलॉजी है. There is a stimulus. You tickle a young kid and she starts laughing because it reacts to the stimulus.
This stimulus, when organized, turns into a perception, and when this perception is thought about, turns into a conception. Okay, अभी के लिए इतना ही. Philosophy of wantlessness is utopian. इच्छा रहित होने का दर्शन काल्पनिक आदर्श है, while materialism is a chimera. जबकि भौतिकता माया है. ये थोड़े से टर्म्स इसमें डिफिकल्ट हैं, टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है. फिलॉसफी ऑफ वांटलेसनेस, इच्छा रहित, कुछ नहीं चाहिए, सेटिस्फाइड, कॉन्टेम्पलेटेड, ओके, इज यूटोपियन. ये जो है यूटोपियन है. यूटोपियन थॉट क्या होता है? जो कि मतलब यूटोपिया मतलब एक ऐसी दुनिया जो कि स्वर्ग है, बहुत अच्छा है. यूटोपियन थॉट मतलब कि विच इज in this particular sense not a practical way. So being selfless is utopian, while materialism is a chimera. Materialism, everybody knows, it is a chimera, that is, it is which is not real. So that means the philosophy of wantlessness, कि सब कुछ इच्छा रहित हो जाए, that is something which is imaginary, utopian thought. लेकिन materialism क्या है जिसमें हम पड़े हुए हैं? That is chimera, that is माया. तो उस सेंस में हमें बात करनी है, जहां पर हम यहाँ पर फिलॉसफी की बात कर सकते हैं, जैनिज्म की बात कर सकते हैं, दान की बात कर सकते हैं, आर्म्स की बात कर सकते हैं. डिफरेंट रिलीजन्स टॉक अबाउट दिस थिंग. द आर्म्स दैट योर राइट हैंड गिव्स, लेफ्ट हैंड शुड नॉट नो. ओके, सो Gandhiji's talisman about life is also one of these aspects. And he had said, if you feel that your ego is over becoming you, think of the poorest person you have seen ever in your life and think what you have done to improve his situation, and you will find that slowly your ego is melting away. So that was Gandhiji's talisman, which can be used here. Then the Maslow's need hierarchy that we had talked about, self-esteem, and then self-actualization, the topmost aspect, can be discussed here. Okay. Anyways, the real is rational and the rational is real. सत ही यथार्थ है और यथार्थ ही सत्य. अब आप देखिए टॉपिक्स कितने ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट हो चुके हैं कि आपको सोचने की जरूरत पड़ रही है, बहुत ज्यादा. ठीक है. द रियल इज रैशनल, जो भी है वो रैशनल है. ओके. रैशनल क्या होता है? Which can be proven with cause effect or through a critical understanding. Immanuel Kant's aspect also come into this aspect. Positivistic thoughts of August Comte comes in here. And the rational is real. Whatever is rational is real. So we have to delve into both these aspects here. Hand that rocks the cradle rules the world. पालना झूलने वालों के हाथों में ही संसार की बागडोर होती है. That means mothers, okay, teachers. So इस aspect को हम कर सकते हैं. What is research but a blind date with knowledge? Blind date क्यों? क्योंकि blind date का concept सबको पता है. रिसर्च में क्या है? सेरेंडिपिटी, लक, चांस, वो भी इन्वॉल्व होता है. उस एस्पेक्ट में बात कर रहा है. दैट यू हैव नॉलेज बट विथ सेरेंडिपिटी इट कम्स अप. जैसे पेनिसिलिन का भी जो डिस्कवरी की फ्लेमिंग ने, वो भी कैसे था? अब्रप्टली हुआ. रेडियो एक्टिविटी अब्रप्टली डिस्कवर हुआ. हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज अ ट्रेजेडी, सेकेंड एज अ फार्स. ओके. देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिसेस. सो बेस्ट प्रैक्टिसेस में हम क्या करते हैं कि हमारा प्रीसेट नॉर्म्स होते हैं regarding quality, regarding beauty, regarding acceptance. So it can further be improved. There is still room for improvement, as they say. Okay. Forests are the best case studies for economic excellence. Plain and simple. Poets are the unacknowledged legislators of the world. One of the difficult topics of this topic. You must have some insights into the literary aspect to write this. Okay. Unacknowledged legislators. That means they are not formally legislators, but unacknowledged ones also.
इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण देते हैं. वी टॉक अबाउट द राष्ट्र कवि ऑफ इंडिया अर्लियर, श्री रामधारी सिंह दिनकर. So he was not an unacknowledged legislator, although he was a member of the Rajya Sabha. So he gave a scathing attack of India's failure in the 1962 war with China. And towards this he wrote, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो. So that means he said that it is only the mighty who can forgive. The forgiveness of a coward, a lame, a person who doesn't have strength does not matter. He insisted upon Nehruji to be brave and to accept the challenges that China has put forward and to make the country strong. So he encouraged the then Prime Minister to take steps to make India stronger through his scathing attack on those times political dispensation. Similarly, even during emergency, Sri Jai Prakash Narayan, through Ramlila ground, gave this battle cry, Singhasan khali karo ki janta aati hai. It was also one of the lines from Sri Ramdhari Singh Dinkar. Okay, so poets, they provide insights into the happenings of the society, the politics, the art and culture, and the very people. And they are helpful in educating people regarding the problems, because they can foresee, jahan na pahunche Ravi, wahan pahunche Kavi. That means they are the unacknowledged legislators. Even in India's freedom struggle, इनकलाब जिंदाबाद और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बिस्मिल. So these are some of the examples from the Hindi literature. Similarly, you can give examples from literature in English or your local language. So therein, you can talk about how poets shape the different legislations by virtue of their writings or compositions. Okay. History is a series of victories won by the scientific man over the romantic man. अब यहाँ पे रोमांटिक का क्या मतलब है? तो रोमांटिसिज्म एक मूवमेंट था यूरोप में when this industrial revolution began. So romanticized people were those who despised the scientific revolution. They depicted the industries as some giant Frankenstein who were bellowing out the poisonous smoke into the air and ruining this peaceful, pristine nature. So they were poets, they were painters, they were writers, they were the romanticized people. So they did not like the changes that the scientific revolution was bringing about. They were the status quoists. So history is a series of victories won by the scientific man over the romantic man. So herein you can talk about the American Revolution, the French Revolution, and so many aspects of Mary Wollstonecraft, the guillotine effect, the reign of terror. Okay. So all these aspects can be discussed here. A ship in harbor is safe, but that is not what ship is for. So if you have talent, it is for you to utilize it for the betterment of the society. That is the gist of it. The time to repair the roof is when the sun is shining. Make hay when the sun shines. So use the opportune time to deliver
the results. You cannot step twice in the same river. अब देखिए ये भी बड़ा abstract topic है. You cannot step twice in the same river because the river, neither the river nor the time remain the same. Once you step into the river and you come out, the water which touched your feet have already flown by. Now when you step again, it is some other water molecules that are touching you because the time has passed. The water has flown downstream. It is neither you nor the river, they are the same. You have also changed because of your past experiences in your life, because of your enhanced, increased knowledge and experience. And now you are a different person. So time and tide waits for none. Very interesting topic. A smile is the chosen vehicle for all ambiguities. Easy. Just because you have a choice, it does not mean that any of them has to be right. Okay. Easy. So now what do we see? Most of the topics are abstract, except this. Abstract, abstract, abstract. All are abstract. अब choice नहीं है. Choice नहीं है. और right भी होना है. दोनों में right होना है. That means abstract. ठीक है. तो what did we discuss till now? We discussed the major aspects, the major trends in UPSC civil services examination till now with respect to the essay paper, how it has transformed itself into a thinking paper and not just something which you already know. It is not something कि बहुत easily calm and composed तरीके से गए और लिख के आ गए बिना तैयारी किया. अब ऐसा नहीं है. पहले हो सकता है हो. The trend has changed and we need to brace ourselves for that. And for that, we must know as to how to write essays, what are the different dimensions and domains of writing an essay. And that is exactly what is the second part of today's orientation class. And we will take a short break and we'll assemble in 10 minutes from now to discuss as to how to write essays. And we'll be back. So stay tuned. Thank you.
सो वेलकम बैक। अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कशन किया उसमें पीछे के ट्रेंड जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में पिछले 4-5 सालों में सवाल पूछे जा रहे थे ऐसे के लिए, वो हमने देखने की, ब्रीफली डिस्कस करने की कोशिश की। इस पूरे डिस्कशन का अभी तक का जो जिस्ट है वो ये है कि जो पहले कन्वेंशनल टॉपिक्स पूछे जाते थे, धीरे धीरे उसका ट्रेंड एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स की तरफ हुआ है। अब एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स यानी कि जो अभी तक हमने इतने सारे एग्जाम्पल्स में देखा कि किनको हम एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक कह रहे हैं, किनको हम कन्वेंशनल टॉपिक्स कह रहे हैं, उसमें किस तरह से अब वो एक चॉइस नहीं रह गया है, बट अब एक कंपल्शन है कि आपको इस तरह के टॉपिक्स लिखने को आ रहे हैं। आगे का ट्रेंड किस तरह रहेगा, यूपीएससी इज ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल, यू डू नॉट नो। हो सकता है कि नेक्स्ट पेपर में आपके ज़्यादातर कन्वेंशनल टॉपिक्स आ जाएं, हो सकता है कि उसमें एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स ज़्यादा हों। तो इसीलिए ज़रूरी क्या है कि दोनों ही टॉपिक्स को लिखना उतने ही तरीके से लिखना आना चाहिए। तो ये चूंकि ओरिएंटेशन की क्लास है, इसमें हमारा जो मोटिव रहता है वो ये है कि आपको ऐसे किस तरह से लिखना है ये भी बताया जाए। तो अभी यूट्यूब पर भी बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि किस तरह से स्ट्रक्चर, ऐसे के स्ट्रक्चर को फ्रेम किया जाए। तो हमारा ये जो अब डिस्कशन है वो प्रिसाइजली उसी तरह से आगे बढ़ेगा। To put all these things what I have spoken in Hindi in perspective, what I intend to say is that till now we have discussed the different trends that UPSC has confronted us with to write essays in all these 4 or 5, 6 years. And what lies in future, nobody knows. So we have to brace ourselves to write both kinds of essays, conventional ones as well as the abstract topics. Okay. So with my association with Forum over several years now, we have seen students securing good ranks, in fact rank 1 in UPSC also, and wonderful copies of students, uh, you know, once they have completed the courses. So uh, there are options of mentorship and all these things also here. So that also enriches what you have learned in your class. So without keeping you much into waiting, the structure of an essay, as you have rightly asked, can be trifurcated into 3 aspects. One is the introduction part, the other one is the body part, and the third one is conclusion. So introduction of a topic is very important because it creates the first impression in the minds of the examiner. It also helps the examiner to understand, to know whether you understand the topic well or not. Okay. An introduction can begin with a quote, an anecdote, a statistics, or it can be a general introduction. Say for example, if earlier I was talking about post-truth world, okay? So a quote to start an essay can be, say, when the truth was tying its shoes, lie traveled half the world. It is how fast fake news travels, and it is how fast lie travels. इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं. When we talk about women empowerment, so we can quote Swami Vivekananda by saying, the society comprises men and women. No society can develop when its women are not developed. For it is not possible for a birdie to fly only on its one wing. Okay.
Similarly, other topics like democracy, if we talk about. So we can say that it is the man's compulsion towards justice which makes democracy possible. Okay. When we talk about happiness, as one of you have rightly quoted, joy can be from inside, happiness is generally from the external factors. So it is partly correct, yes, happiness also comes from within. As we have given the example of parents. So if we see our parents as external factors, yes, it is external. If we see from inside our own being, yes, a family is a cohesive part. So that aspect can associate happiness not only from the external factors but also from the internal factors. You feel happy. You feel happy when you get the opportunity to present your ideas if you are in a meeting. Okay, so that sense, that in that sense, it is an external factor which is giving you happiness. So when we talk about happiness, there is a quote by Gautam Buddha, and he had said, there is no path to happiness. Happiness is the path. Okay. Sometimes you may get confronted with a topic which is related to the oft debated topic, which is religion versus science. So then you can have a quote like, science without religion is lame. Religion without science is blind. So similarly, different kinds of topic require different kinds of quotes. That said, when we will be discussing these different topics in our upcoming classes, I think we'll have a huge collection of quotes, stats, anecdotes and all to help you in writing essays from different dimensions, genres. Okay. For the time being, it is just to know that yes, we can start an essay with a quote. So let me just give you an example. How to start an essay with a quote. Since I was talking about justice, so a topic can be, truth never damages a cause that is just. Okay? Truth never damages a cause that is just. So we can say, justice exists. Peace is more, sorry, we can say, peace is more important than justice. Because justice is made for peace to exist. And then we write forward. Human civilization, the extempore that I'm trying to give you, and coming to the topic, truth never damages a cause that is just. We can write that, as rightly said, that peace and justice are correlated. However, for a civilization to prosper, it is quintessential that an environment of peace exists. In order to ensure that, it is essential that justice must prevail. Justice, not only social, but also political and economic, where all the citizens are treated alike, where there is equality of law and equal protection of law, where people are free
to express their thoughts and practice their faith and religion, where they are at liberty to express their feelings and get the opportunity without any discrimination for self-development. Such a situation exists only in a just society. And in order to ensure that, the reign of truth is paramount, because it is the truth which shines like the sun behind the thick clouds of gloom. It is essential that there is no gainsaying that truth never damages a cause that is just. So what did we do in this kind of an introduction? That we started with a different quote, tried to explain that, and then slowly came back to the topic that was asked. That is, I started with justice and peace, then tried to define what different kinds of justice regimes are, and then how this justice can prevail, because there should be truth, and that is because truth never damages a cause that is just. Okay? So similarly, we can have different quotes and explain the topic, but इसका मतलब ये नहीं है कि रन अप इतना बड़ा हो जाए कि पवेलियन से ही रन अप लेते आ रहे हैं और बॉलिंग कर रहे हैं. मतलब कि ये है कि माय पॉइंट इज दैट द इंट्रोडक्शन शुड नॉट बी टू फार फेच्ड. It should be relevant to the topic, a little bit different, so as to converge the meaning to the topic which is being asked. Okay? तो इस तरह से हम कोट को यूज करके अपने इंट्रोडक्शन को, अपने ऐसे को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. The other aspect is regarding anecdote. Okay? So anecdote is a kind of a short story. All right? तो यहाँ पर we introduce our topic through a short story. And how do we do that? Say, for example, if the topic is self-realization, okay? You have to write on a topic which is about self-realization, confidence, courage. Okay. Say the topic is courage is not falling down, but rising up every time you fall down. Okay. और या फिर हम कहें टॉपिक अगर ये है, जो हमने पहले एक कोट यूज किया था, बड़ा अच्छा कोट है, कन्फ्यूशियस का कोट है, wherein he had said, a mind once enlightened doesn't become dark. So अगर इस टॉपिक को मुझे एनेक्डोट से एक्सप्लेन करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? तो देयर इज अ शॉर्ट स्टोरी, एंड हाउ डू वी, देखिए स्टोरी तो हम बहुत लंबा भी बना सकते हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन में कैसे बनाना है? इंट्रोडक्शन में बनाने के लिए okay, say this is the sheet of paper. Okay, you have written like the topic here, and now you have to write the introduction. So it should be like 3 or 4 paras. Okay, try to finish it on the first page itself, and the second sheet may be like this. Finish. Introduction can be at max this much, and then you start the body part of the essay here. शेक्सपियर ने भी कहा है, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट. शॉर्ट में ही रखना है. तो जैसे अगर मैं एनलाइटमेंट की बात करूं,
So the anecdote can be obviously from the life of Siddharth, who later on became Gautam Buddha, how he saw a dying man, an old man, and the sufferings of them, and he lost all the interest in the materialistic pleasures and went and sacrificed his pleasant lifestyle only in the search of nirvana. And later on, when he gained the utmost uh, the true knowledge of desire of the Four Noble Truths, he got converted into Buddha. So that can be one anecdote. If it were to be a short story, I would say um, there was a young lion cub who got lost in a forest and was rescued by a sheep from a nearby farmer's village. एक छोटा सा शेर का बच्चा था, खो गया, और पास के गांव में ही there was this a farmer who had sheep, and this sheep took that young cub into her custody and took care of that cub as her own child. Okay, so I would write like this: a young cub, a lion cub, got lost in the deep woods and got separated from its parents, who was later rescued by a sheep from a nearby farm village. Okay. Mhm. So this young lion cub started growing up together with the other sheep, and uh, they were always afraid of the wild animals who would often prey upon these sheep. And one day, while this herd of sheep was being chased by a lion, this young lion, who had now grown up, was also running together with the sheep, being afraid of the lion. This lion who was chasing the sheep saw that there is a young lion who is also amongst the sheep, who is running, who is getting afraid and running. So instead of following the sheep to hunt down, that bigger lion followed this young lion and got hold of it and asked, "Why are you running away from me? And why are you amongst the sheep?" He said in a bleated tone, "Don't kill me, please. I'm just a young sheep. I'm no ferocious lion like you." And he said that you do not know what you are. And he took that young lion to a nearby stream and showed him its reflection. And when he saw that he looked completely different from the sheep and looked rather like a lion, he said, "It looks as if I am like you." And he said, "Yes, know your strength and now roar in front of me." And then when he roared, the whole jungle and the whole village was full of his roar. And then he got hold of his courage and his true strength. So this was the story. So it means mind once enlightened doesn't become dark. तो इसको अगर हमें इंट्रोडक्शन में लिखना है, तो अब इतनी लंबी स्टोरी तो लिखेंगे नहीं, तो हमें इसको कैसे लिखना होगा? हमें इसको कम शब्दों में लिखना होगा. तो मैं इसको कैसे लिखूंगा कि a young lion cub who got separated from his parents in the dark woods got rescued by a sheep from a nearby village. The sheep took care of this young cub like her own kids. But the other kids often ridiculed this lion cub
for the way he looked different from them, and because he could not bleat properly. One day, when they all grew up, they were being chased by a big lion. This young lion was also running away from being hunted. The bigger lion saw that amongst the sheep is also a lion who is running away like a sheep, and he got hold of the young lion and asked him, "Why are you running away from me? Why are you not hunting with me?" And he said, "Please do not kill me. I am just a young sheep." And then he saw that there was something amiss. And he took the young lion to a nearby stream and showed him his reflection. And he said, "See, you are no sheep. You are a lion. Now roar for me." And when he realized what his true potential was and how different he was, how different his capabilities were, his mind was enlightened. Remember the word enlightened here. His mind was enlightened, and when he roared, the whole jungle and the village roared with his ferocious voice. This example states that mind once enlightened doesn't become dark. ठीक है, तो यहां पर क्या किया हमने, एक लंबी सी स्टोरी को 2-3 पैरा में कन्वर्ट करके इंट्रोडक्शन को लिख दिया. तो एक कोट को यूज करते हुए हम अपने इंट्रोडक्शन को लिख सकते हैं और एक एनेक्डोट को लिख के कर सकते हैं. बाकी की जब क्लासेस होंगी तो बहुत सारे टॉपिक्स में हम डिस्कशन करेंगे. हर टॉपिक में किस तरह से एनेक्डोट लिख सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, किस सिचुएशन को क्रिएट कर सकते हैं, दैट वी विल डिस्कस. ओके, द अदर एस्पेक्ट इज विद द यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स. ये दोनों हो गए. स्टैट्स को कैसे यूज कर सकते हैं, तो जनरली कन्वेंशनल टॉपिक्स में हम स्टैट्स को यूज करते हैं. जैसे कि अगर एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, पॉवर्टी है, हेल्थ है, इन सब को यूज करते हुए हम स्टैट्स को यूज कर सकते हैं. जैसे अभी हम फार्म अग्रेरियन क्राइसिस की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर भी हम स्टैट्स को यूज कर सकते हैं. जैसे अगर मान लीजिए टॉपिक आता है टू डबल द इनकम ऑफ फार्मर्स इन द प्रेजेंट सिनारियो इज अ मैमथ टास्क, फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज द टॉपिक. ओके, पहले ये था ना कि डबल द फार्मर्स इनकम बाय 2022, अब वो तो हो गया, खत्म हो गया, डबल तो हुआ नहीं. तो क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, तो उसके बारे में हमें बताना है. लेकिन अब स्टैट्स को यूज करते हुए हमें बताना है. तो हम कैसे कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी डेटा इन 2021 7.4% ऑफ ऑल द सुइसाइड केसेस इन इंडिया वर बिकॉज ऑफ अग्रेरियन क्राइसिस. This stats shows the dismal condition of farmers who are compelled to take their own lives because of the rising debt and failing crops. India has always been a play of monsoons. Now it has also become a play of climate change. With the rising incidents of extreme weather phenomena, together with the lack of resources amongst small and marginal farmers, who constitute more than 80% of the farmers in India, having less than 2 hectares of land. देखिए, ज़्यादातर स्टैट्स पे हम बात कर रहे हैं. The situation is grim. However, not all is lost, for India has the largest land under cultivation, with more than 56% of its land under irrigation, and ranks at the top amongst many crops which are produced in this great land. Hence, a multi-pronged approach is required to double the income of farmers, which, although difficult, but not an impossible task. तो इस तरह से हम अपने इंट्रोडक्शन को स्टैट्स के माध्यम से दिखा सकते हैं, लिख सकते हैं. ओके, ऑलराइट. सो द नेक्स्ट एस्पेक्ट इज जनरल. मैं प्रेफर करता हूं हमेशा ऐसे लिखना, इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए. कोई कोट अगर आता है और उसके साथ में एक एनेक्डोट को लिखते हुए, या फिर कोट प्लस
स्टैट्स को यूज करते हुए, कोट प्लस स्टैट्स या कोट प्लस एनेक्डोट, दैट आई प्रेफर पर्सनली। बट अगर मुझे कोट नहीं पता है तो कम से कम मैं एनेक्डोट तो ज़रूर दूंगा। भाई थोड़ी तो क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी ना, ऐसा नहीं कि सब कुछ। अब मुझे कोट भी नहीं पता, मुझे एनेक्डोट भी नहीं पता, मुझे स्टैट्स भी नहीं पता, तो फिर क्या करूँगा? लिखना तो है ही, ऐसा तो नहीं कि यूपीएससी नहीं दूँ, यूपीएससी भी देना है। तो जनरल टाइप का इंट्रोडक्शन हम लिखते हैं। हाँ 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 हाँ। यस। No, you always write a précis. It is always, see, when we write a short story, it should be lesser number of sentences so as to convey the meaning. कई बार brevity is the soul of it, कई बार हम उसी चीज़ को पूरे नॉवल में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन जब उसी का जस्ट एक पेज में लिख के देना हो तो कैसे लिखते हैं? पीआरएस इंडिया में भी आता है ना, एक पेज की समरी आती है। कैसे आती है? पूरे इतने बड़े लॉ को समराइज कर देते हैं, सारी निटिग्रिटीज नहीं बतानी है। जैसे अभी ये लायन वाला इंसिडेंट था, इसमें हम ये हटा सकते थे कि वो जो यंग शीप थी वो इसको रिडिक्यूल करती थी वगैरह वगैरह, वो सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो यानी कि फैट को ख़त्म कर सकते हैं और जिस्ट को बता सकते हैं। ठीक है, वो हो जाता है, बाई प्रैक्टिस वी गेट दैट इन्फॉर्मेशन। यस। तो जनरल इंट्रोडक्शन में क्या है, फिर सीधा सीधा टॉपिक को हम एक्सप्लेन करते हैं, उसकी मीनिंग को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। बट आई पर्सनली वुड नॉट प्रेफर बिकॉज इट शोज योर लैक ऑफ क्रिएटिविटी एंड आर्टिकुलेशन ऑफ थॉट्स। ठीक है, तो ट्राई टू यूज एज मेनी ऑफ दीज एस्पेक्ट्स एज पॉसिबल। वन अदर एस्पेक्ट इज ऑल्सो देयर विच इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस, देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हाइपोथेसिस एंड थियरी। Theory is proven. Hypothesis is something which is not completely proven or has certain anomalies and is considered as a fact, is as an imagination. ठीक है, सरप्राइजिंगली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियोरी नहीं है, हाइपोथेसिस है। ठीक है, एनीवेज, हाइपोथेसिस को यूज करते हुए इंट्रोडक्शन हम कैसे लिख सकते हैं? उसमें हमें कोई सिचुएशन इमेजिन करनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे या फिर मुझे अगर बिग टेक पे कोई ऐसे लिखना है, या मेरा ऐसे आ गया डेटा इज अ न्यू ऑयल। ठीक है, तो आई कैन स्टार्ट माई ऐसे यूजिंग अ हाइपोथेसिस बाय सेइंग, बाय राइटिंग लाइक दिस, a normal day of an office goer in Delhi starts with technology, starts with technology and ends with technology. By the he gets up by the alarm in his smartwatch, goes for a stroll to see how many steps he has covered along with his heartbeat, and then gets ready for his office and using the Ola or Uber app calls a cab to the nearest metro station, and therein he goes and along the way he uses Google Map to see how much time will it take for him to reach there. Therein, when he goes there, he boards the metro and comes to his office. He uses the Teams software to do video conferencing. Similarly, when he comes back home, he binge watches the television on Netflix and goes back to sleep. Even during his sleep, he is wearing his smartwatch, which constantly measures his heartbeat and SpO2 level. This normal day in one's life is a testimony to the penetration of big tech in one's daily lives. Similarly, it has infiltrated into the very aspects of one's survival of getting information and solving a particular problem. There is no gainsaying that data is the new oil. ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये मैंने एक एनेक्डोट से समझाया।
वही अगर मुझे एक हाइपोथेसिस से समझाना हो, टॉपिक थोड़ा डिफरेंट लेते हैं, टॉपिक ले लेते हैं से एनवायरमेंटल चेंज, तो मैं हाइपोथेसिस से कैसे समझाऊंगा, थोड़ा साइंस फिक्शन की तरह। ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा लोग नहीं यूज़ करते हैं ये तरीका, क्योंकि पता नहीं, हो सकता है मन में डाउट होता है कि इस तरह का लिखेंगे तो फिर कैसे होगा, बट for UPSC you have to be brave. The first aspect is self-belief. That is very important. So considering this, climate change is a crisis, is a moral crisis. Say this is the topic. Okay. तो मैं ऐसे लिखूंगा कि this is year 2050. Young Isha, who is 8 years old, is getting ready to go to her school. It is almost time that her AirPod would be reaching near her balcony, which is at the 120th floor. It is now no more safe to travel on roads because the sea level has risen so much that it has inundated up to the 10th story of the building, and now AirPods are the only way to travel. Suddenly she hears the horn of her AirPod and rushes to hop onto it, when her mother follows her and says that she had forgotten to take her breakfast, that is the multivitamin pills. Agriculture has now been completely perished, and now multivitamins are the only means of getting proper nutrition. And suddenly she gives the portable oxygen cylinder to her because the air is so polluted, it is akin to poison. Such is the, thankfully, this is year 2023, and this grim situation has not arrived yet. We are the first generation to feel the pinch of climate change, and the last generation which can do something to change it. For we cannot have plan B because we do not have planet B. तो इस तरह का एक हाइपोथेटिकल लेकर के हम अपने ऐसे को भी लिख सकते हैं, और ये बहुत कारगर होता है, कई बार बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि दिस शोज योर इमेजिनेशन, इट शोज योर आर्टिकुलेशन ऑफ थॉट्स, एंड देन इट इज़ लाइक समथिंग, यू आर कमिंग आउट ऑफ अ मूवी. क्या होता है मूवी में, सबसे पहले क्या दिखाते हैं, वॉर हो गया, सब खत्म हो गया, हीरो पहले ही मर गया, पता चला वो उठ गया, अरे ये तो सपना था. तो क्या हुआ, रियलाइजेशन होता है, ये हमारे डर को सामने लाता है, और फिर हमें बताता है कि सिचुएशन अभी खराब नहीं हुई है, अभी भी जाग जाओ. तो हाइपोथेसिस कुछ इस तरह से काम करती है. तो ये भी एक तरीका है ऐसे को लिखने का. मैंने इसको बाद में अलग से ऐड किया क्योंकि जनरली लोग उस तरह के नहीं लिखते हैं. ओके, तो इंट्रोडक्शन इज दैट एस्पेक्ट. इतने तरीकों से हम अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. इट शुड बी शॉर्ट, यू शुड नॉट बी टेकिंग द रन अप फ्रॉम द बाउंड्री, कि वहां से रन अप लेंगे तब बॉल करेंगे. भाई विकेट पे ही करना है, थोड़ा छोटा सा रन अप ले लो. मतलब यह है कि आपको अपने ऐसे के इंट्रोडक्शन को बहुत वाइड नहीं रखना है, टॉपिक से रेलेवेंट ही बात करनी है. जस्टिस की बात हो रही है तो मोरालिटी की बात से ना शुरू कीजिए, जस्टिस से ही शुरू कीजिए, जस्टिस और पीस से शुरू कर लीजिए. साइंस की बात कर रहे हैं तो साइंस और रिलीजन के डिस्कशन से शुरू कर लीजिए, लेकिन रेलेवेंट हो. ऐसा नहीं कि वो दूसरी ही कुछ बात कर रहे हैं फिर वहाँ पे आएंगे, मतलब इतना ऑफिसकेट नहीं करना है चीज़ों को. ओके, सो दिस इज the first part and the most important part of an essay, which is the introduction. Generally हम अपनी classes में क्या करते हैं कि we encourage the students to offer their insights into their experiences, into the anecdotes and all. So people coming from different backgrounds have different thoughts and they give different anecdotes, and then we try to devolve an extempore for a particular topic through different means, so that can also be one of the ways of writing an essay. So you have a compendium of different anecdotes and quotes which you can utilize in your essays. Okay, and then the second part is the body part, which is an extension of what you have written in your introduction.
यहाँ पर there are certain tools of writing in the body part of it. One is the organic approach. देखिए यहाँ पर चूंकि ओरिएंटेशन की क्लास है तो आई कैन ओनली गिव यू शॉर्ट एग्जाम्पल्स हियर, बाकी जब डिटेल में डिस्कशन करेंगे तब तो हम वहाँ पर बात करेंगे। आई जस्ट गिव यू कि इसमें हम अलग अलग क्या टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक अप्रोच का मतलब होता है, ऑर्गेनिक अप्रोच व्हाट आई मीन इज कि like an organism grows from small to big. Similarly, this approach can be individual, family, community, state, nation, world, and all. Sorry. Okay? आपको लग रहा है ना कि कुछ चीज़ बढ़ रही है। मतलब क्या हुआ कि जब हमें किसी एस्पेक्ट को समझाना हो तो हम उसका इम्प्लीकेशन इंडिविजुअल लेवल पे बताएं, फिर हम उसको बताएं कि उसका फैमिली लेवल पे क्या होता है, फिर कम्युनिटी लेवल पे क्या है। से फॉर एग्जांपल इफ़ वी टॉक अबाउट वैल्यूज़, इफ़ वी टॉक अबाउट मोरालिटी, ओके, तो वहाँ पर वी कैन से दैट फॉर अ जस्ट सोसाइटी values and morality play a paramount role, and the change begins from within. The young kids should be imparted value education at different levels. During schools, they should be given the values of respecting their elders, speaking the truth, being honest, and likewise. While they grow up, go to the college, there are hormonal changes, and accordingly their thought process and worldview also changes. Therein, the value education should be towards gender justice, towards taking care of their parents, being serious in life towards their career, by following honest means of livelihood, and likewise. Even during their midlife, when they are into a service or their profession, it is the role of the government, the community, the NGOs, and their elders to have an interaction regarding the changing values, how they should deal with the younger generation, to bridge the generation gap, to acquaint themselves of the trends and changes so that they do not fall apart, and how with their experience they can bring about a change in society. So value education is not a one-stop phenomena. It grows from individual to the family, to the nation, and likewise. Similarly, अगर हमें इसे आगे बढ़ाना हो कि values also play a very important role in at the national level. A nation comprises people from different ethnicities, religion, race, caste, creed, and gender. To respect all these differences, it is imperative that the values of justice, social, political, economic, as well as ensuring the rule of law, equality of law, and equal protection of law is the paramount duty upon a state. ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट की बात कर दी, नेशन की बात कर दी. Similarly, the world community has humongous challenges to ensure that the development in the world is inclusive and sustainable. For that, the internal strife between different countries can be resolved through the values of cooperation and brotherhood, as is the theme of G20 mission, while India has assumed presidency. One earth, one family, one future, which should truly reflect the phenomenon of Vasudhaiv Kutumbakam. The non-alignment movement in its newest form
can also be one of the neutral ways in resolving disputes. तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने किस तरह से वैल्यूज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. सो दिस इज द ऑर्गेनिक अप्रोच ऑफ राइटिंग एन एसे, वन ऑफ द एस्पेक्ट्स. ओके, बट इससे सारी चीज़ें सॉल्व नहीं होती. इससे सिर्फ एक पार्ट पता चलेगा. ये कहाँ काम आता है? जब हमें लिखना हो कि हम जनरली हम ऐसे में बॉडी पार्ट में क्या लिखते हैं. आई विल राइट इट हियर. बॉडी पार्ट में हमारे पास में जो ऐसे को आगे बढ़ाने के तरीके होते हैं वो हैं क्वेश्चंस, जैसे कि व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ. इन्हीं सब से तो होता है. जैसे अगर मैं अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूं या मैं पॉवर्टी की बात करूं, तो व्हाट इज पॉवर्टी दैट आई शुड नो. इज इट जस्ट द इकोनॉमिक पॉवर्टी? द आंसर इज नो. It can be moral poverty also, it can be cultural poverty also, it can be environmental poverty also. Somebody who is taking bribe is morally corrupt. Somebody who is not respecting the rights of other is a conceited person, is also ethically corrupt. Somebody who is damaging the environment is environmentally corrupt. So similarly, people can be corrupt, nation can be corrupt, poor. So likewise, so poverty has a bigger definition. Similarly, if I talk about health, so it is not just the absence of diseases, but a well-being of physical, psychological, mental and psychological well-being. So that is health. So when we write about that, we have to define what that word is. We have then to explain the different dimensions of that topic. The why aspect requires us to know what are the statistics associated with that, what are the challenges, what steps have been taken up, what are the prevailing challenges even after taking those steps. So these aspects. So that is why the why. Where, that means you have to give examples from India and from the different parts of the world so as to give it a holistic meaning. When, that means in different contexts it can mean differently. When means what has been done in the past. Say for example, there was this topic that the history is replete with examples of victories of a scientific man over a romantic man. यही एक टॉपिक था. तो वहां पर हमें क्या बताना है कि 1750s में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, तो व्हेन वाला वो एक पार्ट हो गया. फिर सेकंड इंडस्ट्रियल, थर्ड, फिर अभी हम IR 4.0 पर हैं, अभी क्या चल रहा है. तो ये व्हेन का एस्पेक्ट हो गया, यानी कि हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स के साथ में हमें ये समझाना है. एंड हाउ इज द penultimate part of an essay, wherein we talk about, when we have already talked about the various challenges and the steps already taken up, still there are problems. So what is the way ahead? Okay, so the way ahead will be the most practical and pragmatic part of your essay, which shows that you are writing this essay for UPSC and not for doing a PhD. इसका मतलब ये नहीं कि पूरा थीसिस लिखना है. हमें हमेशा यहाँ पर अप्रोच रखना है पॉजिटिव और एक्शन ओरिएंटेड. चैलेंजेस को चैलेंजेस बोलना है, प्रॉब्लम्स नहीं बोलना है. तो क्या करना है वो भी डूज एंड डोंट्स में बात करते हैं. तो हाउ में हमारा आ गया वेज अहेड, और फाइनली इसके बाद में हमारा आ जाता है कंक्लूजन, जो कि थर्ड पार्ट है. ठीक है, ये तो हो गया कि हमारे ऐसे को आगे बढ़ाने के लिए क्या अप्रोच रखना चाहिए. इसके अलावा एक होता है डायलेक्टिकल. डायलेक्टिकल ही क्वेश्चंस का फॉर्मेट है. पहले जो ट्यूटोलॉजी था, आपका ट्यूटिलेज था एरिस्टोटल के टाइम पे, there was a discussion between teacher and the students, wherein they used to ask questions, then it was deliberated upon, and then a conclusion was drawn. Similarly, in your essay you can also pose question. If poverty is so bad, why does it prevail even after so much of socio-economic development? A question mark, and then you go on and explain that. It doesn't mean that you have to write all the questions and then write answer and question answer. It doesn't work that way. Here and there, one or two questions during your essay shows that you are contemplating during your essay. Okay, so it has to be a thinking essay rather than just a rote memorization of your GS aspects. Okay, then the third aspect is range versus depth. ऐसे के लिए अच्छी बात यह है कि you should have a wide range. Wide range का मतलब क्या है? अलग अलग dimensions को
हमें कैप्चर करना है। इसको what I personally call is as the domain approach. Domain approach. What I believe is हम अलग अलग एस्पेक्ट्स में बात करते हैं इसमें। जैसे किसी भी एक टॉपिक को एक्सप्लेन करना हो तो वहां पे हम उसको पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, सोशली, कल्चरली, एनवायरमेंटली, इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली, ओके, फिर साइंस एंड टेक एस्पेक्ट्स, देन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, देन फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट। ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं मैं इसी क्रम में, ज़्यादातर इसी क्रम में, या फिर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा बहुत दाएं फेरबदल कर ली, ये सारे एस्पेक्ट्स ट्राई करता हूँ अपने ऐसे में डालने के लिए। उससे क्या होता है, एक हमारे जो रेंज है डिस्कशन का वो बढ़ जाता है। जैसे अगर हमने हेल्थ की बात की, ठीक है, तो हेल्थ में भी हम उसको पॉलिटिकल एस्पेक्ट में कैसे बात कर सकते हैं। हम ये बात कर सकते हैं कि as per a McKinsey report, the out-of-pocket expenditure in India is to the tune of 67%, and it has prescribed to increase the spending in healthcare infrastructure in India to 6%, which at present is merely 3.1%. Even the 12th 5-year plan had envisioned to increase it to 6%. ठीक है, तो ये एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट में हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उनकी एबिसमल कंडीशन, आशा वर्कर्स भी को भी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, डॉक्टर्स जो हैं वो यंग डॉक्टर्स आर नॉट वेरी कीन टू गो एंड सर्व इन रूरल एरियाज, सो दैट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव इशू, वो हम बता सकते हैं। सोशली हम क्या बात कर सकते हैं? Yes, and surprisingly, the last batch which ended 2 weeks back, we had a hearty laugh regarding this when students said कि सर सारे टॉपिक को हम एक ही तरीके से कर रहे हैं डिस्कशन, 2-3 टॉपिक्स को ऐसे किया, तो उससे क्या हुआ कि बता रहा, उसमें क्या है, द स्केलेटन रिमेन्स द सेम, इट इज़ अ ह्यूमन स्केलेटन, बट एवरी individual is different. So whether you are talking about health, whether you're talking about education, whether you are talking about abstract topics, you will see that in future classes, we will use this approach, the organic as well as the domain approach, in discussing almost all the topics, because these are the tools, and how to use those tools will surprise you, that you don't have to think here and there, because the ultimate picture is there in your mind, you just have to fill in the blanks. तो वो आ जाएगा। अभी 3-4 क्लासेस जब हम देखेंगे तो अपने आप ये स्केलेटन हमारे दिमाग में छप जाएगा, एंड इट हेल्प्स इन नॉट ओनली ऐसे बट ऑल्सो इन जीएस आंसर्स। वहाँ पर उसी को शॉर्ट में लिखना है, यहाँ पर उसी को इलेबोरेट करके लिखना है। इससे फ़ायदा ये रहता है कि आपके बहुत सारे एस्पेक्ट्स कवर हो जाते हैं, चीज़ें छूटती नहीं हैं। कल्चरली एस्पेक्ट में भी हम कैसे बता सकते हैं? द स्टिग्मा एसोसिएटेड विद एड्स, with TB and all these aspects, okay? Environmentally, so as per a Lancet report, hygiene, it was studied, it was found that environmental pollution, especially related to hygiene, is related to the loss of cognitive abilities in children because of a concept known as environmental enteropathy. होता क्या है, बच्चे जब दूषित जल, पानी गलत कंज्यूम कर लेते हैं तो उससे उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ कम होने लग जाती हैं। तो उसी पे एक स्टडी की गई थी 2016 में, लैंसेट की स्टडी थी, और उन्होंने इसको एनवायरमेंटल एंटेरोपैथी टर्म दिया। तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एनवायरनमेंट से हेल्थ को जोड़ सकते हैं। सिमिलरली वी कैन टॉक अबाउट दैट दिल्ली वाज टर्म्ड एज अ गैस चैम्बर बाय द ऑनरेबल कोर्ट। सो और फिर उसकी वजह से ग्रैप लगा, फिर ऑड इवन स्कीम भी लगी। तो है क्या, एनवायरनमेंट का हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। एनवायरनमेंट कैन बी एक्सटर्नल एज वेल एज it can be considered your office space also. It is also a kind of environment. Mostly the lifestyle has now become sedentary, which is leading to
health related issues like diabetes, hypertension, and all such kinds of ailments. There is also one stats regarding this, which states that the average Indian spends less than 150 minutes of normal walking and 75 minutes of brisk walking in a week, which is, and the situation is even worse for women, which who cover only 50% of these timings, which is one of the major reasons behind rising health lifestyle related diseases in India. It is by one of the studies done in India specifically. तो वहाँ पर हम environment को stats के through, reports के through बता सकते हैं. Similarly, if I talk about, say, science and technology, okay, so science and technology has helped us in food processing, and that is why frozen foods, packaged foods, etc., are easily available. And with the fast-paced life, people seldom cook food; they order it from Zomato and all. I should not rather name, but from maybe online apps, and use a lot of packaged food which are high in sodium content and are high in trans fats and are not very good for health, which add bulk to your food but not the right nutrients. So it is also one of the reasons behind rising issues. And therein you can observe the obese children. पहले हमारे टाइम पे तो सब लीन हुआ करते थे, क्यों? साइकिल चला करके स्कूल जाना है. अभी क्या है, बसेस हैं, आराम से आना जाना हो जाता है, और बर्गर्स हैं, पिज्ज़ा हैं, ये सब खा रहे हैं. एंड ऑब्वियसली ये सब जो ट्रांस फैट होता है, इट्स वेरी tasty, and that is why it is addictive also. So science and technology is also related to health. On a positive side, science and technology has helped in eradication of diseases. And recently ये जो कोविड के टाइम पर हुआ, तो वहाँ पर भी जो वैक्सीन डेवलप हो पाई, तो उससे इम्यूनाइजेशन की वजह से जो लेटर वेरिएंट्स आए ओमिक्रॉन और वगैरह उसके बाद में, तो देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ इम्यूनिटी in the bodies. Similarly, when we talk about health in a spiritual aspect, so it is said that body is like a temple, and it should be given due respect. So what we eat, even in our scriptures, there are different kinds of food, sattvic, tamasic and all. तो वहाँ पर वो वाला aspect बता सकते हैं. Intermittent fasting and fasting for a day are also one of the customs in our religions, which is a kind of detoxification of the body. ठीक है, तो ये एक स्पिरिचुअल एंगल भी हम हेल्थ से जोड़ लेते हैं. उसी तरह से फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट में अगर हम बात करें, ठीक है, तो फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट में हमारे पास जितने भी अलग अलग टाइप के फिलोसोफर्स हैं, उनमें से हम ये कह सकते हैं इमैनुअल कांट को यूज़ कर सकते हैं. अब देखिए, इमैनुअल कांट ने क्या बात की है? कैटेगोरिकल मॉरल इंपेरेटिव की बात की है. मतलब डिटेल में तो हम बाद में बात करेंगे. कहने का मतलब ये है कि द एंड डजंट मैटर, द एक्ट इन इटसेल्फ should be moral. So, and man is an autonomous being. He acts according to a law that he gives on to himself. So, if he harms himself, that means he is doing a crime. So, if he is not taking care of his health, that is, he is committing a crime against his own self, which is not moral, not ethical. तो इस तरह से हम एथिक्स से भी इसको जोड़ सकते हैं. अब सोचिए, यही सारे एस्पेक्ट में एनवायरमेंटल पोल्यूशन के लिए भी जोड़ सकता था. सेम है पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी जोड़ सकता था. ठीक है, जैसे स्पिरिचुअल में अगर हम बात करते तो क्या लिख देते? यत्र नारेस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, वेयर विमेन आर रिस्पेक्टेड, गॉड्स रोम अराउंड देयर. हाँ, वी कैन राइट इन रोमन स्क्रिप्ट यत्र नारेस्ते पूजन्ते, बस दैट मीन्स like XYZ. Of course. I have written myself and I have scored more than 150 3 times. So I don't think there is a problem. Okay. No, nothing. Only because the medium of that you have chosen to write is English. अगर हिंदी चूज कर लेते हैं तो प्रॉब्लम ही खत्म है ना? तो उसमें कोई बात नहीं है. अब आता है डूज एंड डोंट्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसमें
I would give a disclaimer. No essay is perfect. There is no single way of writing an essay. For some people, writing one kind of an essay is good. For the others, it is different. But what I believe is there is a purest form. कई लोग हैं जो ग्रामर को बहुत सीरियसली लेते हैं, इट्स और एपोस्ट्रफी के साथ एस में नहीं लगाया है उसको भी बड़ा सीरियसली लेंगे. तो लैंग्वेज चाहे वो हिंदी लिखें या इंग्लिश लिखें, वो ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए. जो लोग उसको ध्यान नहीं देते और नेट पे ट्रॉल करते हैं लोगों को, अरे ग्रामर नाजी आ गया, तो वो गलत है. लैंग्वेज शुड बी गिवन ड्यू रिस्पेक्ट. सिमिलरली राइटिंग स्टाइल ऑल्सो डिजर्व्स इट्स ड्यू रिस्पेक्ट. पहले के टाइम पर जब लेटर्स लिखे जाते थे, कौन सी चीज़ राइट में लिखनी है, कौन सी लेफ्ट में लिखनी है, कितनी स्पेसिंग के साथ लिखनी है, इसको बहुत कायदे में देखा जाता था. टेलीग्राम्स होते थे, टेलीग्राम्स को बहुत कम शब्दों में लिखना होता था. सब लोगों ने बोर्ड में इंग्लिश का पेपर लिखा होगा, तो वहाँ पर भी क्या है, ऐसे लिखने का अलग तरीका है, प्रेसी लिखने का अलग तरीका है. अगर आप स्पीच लिखते हैं तो वो अलग होता है, प्ले राइट की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो वो अलग तरीके का होता है. तो सब किसी का लिखने का एक अलग तरीका है. ऐसे को लिखने का भी एक अलग तरीका है. और उसमें क्या करना है से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि क्या नहीं करना है. तो ये डिस्क्लेमर इसलिए है क्योंकि कई लोग वो करते हैं फिर भी नंबर मिल जाते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि वो सही तरीका है, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर कई बार और लोग भी करते थे कि ठीक है कोई बात नहीं, बच्चा है जाने दो. लेकिन जनरली ट्रेंड्स में ये है कि आपको एक सेट नॉर्म फॉलो करना चाहिए. दैट इज़ माई पर्सनल बिलीफ. बाकी लिखने वाले अलग तरीके से भी लिखते हैं, कोई उसमें गलत नहीं है कि अगर आप कल को जनरल तरीके से ऐसे में इंट्रोडक्शन लिख दें और आपके 150 के ऊपर नंबर आए, बोले कि सर आपने तो कहा था कि जनरल से लिखना नहीं चाहिए. तो मेरा ये नहीं कहना है कि एक ही तरीका सही है. कोई भी तरीका फुल प्रूफ नहीं है. एक ही तरीका फुल प्रूफ हो सकता है, वो ये है कि आप अपने थॉट्स को कोहेसिवली और एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में अपने ऐसे में लिख पाते हैं, कवरिंग ऑल द डिफरेंट डायमेंशंस with a critical reasoning and analysis. That I think will be a good essay. Okay, so there is no perfect essay as such. So the question comes, what are the do's and the don'ts? So the don'ts first. Okay, with that disclaimer: no chart, no bar graph, no diagram. Okay, right? कोई चार्ट नहीं बनाना. ये बार चार्ट बना दिया, देखो इंडिया में इकोनॉमिक पॉवर्टी ऐसे बढ़ गई, कुछ नहीं. जीएस में लिखिए, जीएस में बहुत अच्छा है. हाँ हाँ, गलत है, नहीं करना चाहिए. आप कभी भी पढ़िए जो अच्छे ऑथर्स की एसेज हैं, है ना, उन्होंने लाइफ पर बहुत सारे एसेज लिखे हैं, बहुत सारे आते हैं, कहीं पे आपको डायग्राम वगैरह नहीं मिलेगा. नहीं लिखना चाहिए, मेरा अपना मानना ही है. बाकी लिखते हैं ठीक है, बट मैं पर्सनली मैंने कभी नहीं लिखा और फिर भी मेरे नंबर ठीक ठाक आए हैं. तो आई वुड से कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है. और प्लस ड्यूरिंग ऑल दीज ईयर्स दैट आई एम एसोसिएटेड in teaching, I found people who have not written, drawn these diagrams have scored well. Okay, हाँ. So हाँ, it doesn't look nice. क्या फर्क, क्या लगेगा वो जीएस का आंसर लिख रहे हैं या फिर ऐसे लिख रहे हैं. तो मुझे पर्सनली, मुझे आई फील इरिटेटेड व्हेन आई सी अ मैप और डायग्राम. मैंने कहा ज्योग्राफी में बना लेना, ज्योग्राफी में वर्ल्ड मैप भी बनाओ, वहाँ तो हर आंसर के साथ 2 डायग्राम बनाना ज़रूरी है. ठीक है. अच्छा, उसके बाद में नो मैप्स ऑफ कोर्स, नो पॉइंट फॉर्मेट, बुलेट पॉइंट फॉर्मेट. इस तरह का जो लिखा है ऐसे में नहीं चलेगा. आपको एक बड़ा फनी इंसिडेंट बताता हूँ. आई वॉज राइटिंग माई मेन्स दैट ईयर, आई थिंक इट वॉज 2014, हाँ 16, यस 16 दैट है. तो it was GS4 and the other papers had gone well. और उसमें अब आ गया GS4 का, तो लिखना शुरू कर दिया बहुत जोश में, बहुत अच्छा लिखना शुरू किया, सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना शुरू किया. समय का अंदाज़ा नहीं रहा. लास्ट में ये हो गया कि 20 मिनट बचे थे और 3 केस स्टडीज़ करनी थी. तो फिर पसीने छूटने शुरू हो गए कि अब क्या करें. तो अब 5 मिनट तो पढ़ने में निकल जाता है, उसको लिखें कैसे. तो वहाँ पर पहले केस स्टडी को तो मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखा
दूसरे में इतना समय नहीं बचा, तो मैंने क्या किया कि उसको फट से पढ़ा और पढ़ करके बस बुलेट पॉइंट, स्टेक होल्डर्स ये हैं, इशू ये है, इसका पॉसिबल सोल्यूशन ये है, कुछ ऐसा करके लिख दिया। मैंने कहा जो करना है करो। नंबर लेकिन 117 आए, उस साल के हिसाब से वो ठीक थे। मुझे लगता है कि अगर शायद सेंटेंसेस पूरे लिखे होते तो थोड़े ज़्यादा आ जाते, लेकिन मुझे ये लगा कि बहुत सब्सटैंशियल अंतर नहीं पड़ा, क्योंकि बात हमने पूरी कन्वे कर दी। पेपर पूरा लिख करके उसको लास्ट में वो बनाते नहीं है, कंप्लीट कर दिया। नंबर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ा। तो जीएस के आंसर में तो समझ में आया मुझे कि कुछ भी करके लिख दो। वही जीएस 1 में भी क्या था, 135 मिले, लेकिन उसमें भी लास्ट के 2 आंसर्स में इसी तरह से बुलेट पॉइंट रखा, कोई भी सवाल छोड़ के नहीं आए। मेन ये पॉइंट, मैंने कहा 2 ही नंबर देगा, देना है, लिख देना है, छोड़ के नहीं आना चाहिए सवाल। लेकिन ऐसे में अनफॉर्चुनेटली पॉइंट का कोई फंडा नहीं है, और फॉर्चुनेटली इसमें टाइम बहुत है, क्योंकि आपको 2 एसेज लिखने हैं और टाइम लिमिट अच्छी खासी है आपके पास में, तो आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं अपना। ठीक है, तो द डोंट्स आर लाइक दिस। इसके अलावा कुछ डोंट्स और हैं। डोंट्स क्या हैं? डू नॉट नेम एनी पॉलिटिकल पार्टी, डोंट नेम एनी प्रेजेंट पॉलिटिशियन, डोंट यूज कंट्रोवर्शियल थीम्स अनलेस नेसेसरी। कंट्रोवर्सी में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि हिजाब होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अरे भाई सब जुडिस है, होने दो। फिर शबरीमाला का केस है, उसमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, सब जुडिस चीज़ों को कोशिश कीजिए अवॉइड कीजिए। अगर अनअवॉइडेबल है, उसी से रिलेटेड लिखना ही है, बहुत बनाइन तरीके से लिखिए। कोई भी एक्सट्रीम वर्ड नहीं यूज करें। ओनली दिस इज ट्रू एंड नथिंग एल्स इज राइट। जैसे हम प्री में भी देखते हैं ना, जो ऑप्शन, जिस ऑप्शन में ओनली लिखा होता है तो हमारे कान खड़े हो जाते हैं, यार ये गलत होगा पक्का, ये वाला ऑप्शन बहुत एक्सट्रीम है, इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। तो वो वाली चीज़ हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो सवाल आता है कि करना क्या चाहिए? करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना चाहिए, बैलेंस्ड अप्रोच रखना चाहिए, और पॉजिटिव एटीट्यूड हमारा रिफ्लेक्ट होना चाहिए। हमारे फाउंडेशनल वैल्यूज जो आयोडिस हैं, मैं हमेशा इसको आयोडिस से याद करता हूँ। आयोडीन तो याद रहेगा, आयोडिस भी याद रहेगा। इंटेग्रिटी, ऑनेस्ट ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू ड्यूटी, और क्या है आई से, इम्पार्शियलिटी, कंपैशन, एम्पैथी। आयोडिस याद हो गया। तो कभी भी कोई भी चीज़ लिखें, ये ध्यान रखें कि ये यूपीएससी के लिए मैं लिख रहा हूँ, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, पुलिस ऑफिसर बनना है, जो भी बनना है, उसमें सिविल सर्विसेज की वैल्यूज, फाउंडेशनल वैल्यूज का ध्यान में रखते हुए लिखना है। जैसे एनडीए वगैरह में जब एग्जाम होता है तो उसमें पर्सनालिटी टेस्ट वगैरह होता है। उसमें क्या होता है, एक एक शुरुआत में एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। क्या दिखाते हैं? एक पिक्चर दिखाते हैं, हाँ, और उस पर आपको स्टोरी लिखनी होती है, क्या क्वालिटीज आपने देखी। तो उससे ये देखा जाता है कि विच क्वालिटीज यू ऑनर, टीम वर्क, ऑनेस्टी, डेडिकेशन टुवर्ड्स ड्यूटी, ठीक है, फॉलोइंग द ऑर्डर्स, ये सब ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं। उसी तरह से सिविल सर्विसेज में ये आयोडिस की प्रॉपर्टीज हैं, वैल्यूज हैं। तो हमेशा इनको ध्यान में रखते हुए अपने ऐसे को लिखिए। ओके। पॉजिटिव एटीट्यूड की जरूरत क्यों है? इसलिए जरूरत है क्योंकि आप पान वाले के पास जाइए और उससे पूछिए कि अभी ये पुतिन को क्या करना चाहिए, वो बता देगा आपको। वो बता देगा, कह रहे हैं ये पुतिन वाह बहुत ऐसा कर लिया, इसको नहीं करना चाहिए था। तो उसको वॉर उसको लड़ाई और झगड़ा नहीं करना चाहिए, अरे ऐसा क्या हो गया, कोई बात नहीं, समझा लेता, बुझा लेता, अब भी कर लिया, चलो कोई बात नहीं थी, ठंड पड़ रही है, इतने सारे लोग मर रहे हैं। उसको पूरा ज्ञान होगा, और बहुत अच्छा ज्ञान होगा, कंसीडरिंग कि वो जिस तरह के मसालेदार न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा। दिन भर टाइम है न्यूज़पेपर पढ़ने का। मेरा ये नहीं कहना
कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको उसकी नॉलेज को हम रिडिक्यूल करें, मेरा ऐसा बिल्कुल मोटिव नहीं है। मेरा बस ये कहना है कि हर आदमी के पास में पूर्ण ज्ञान उपलब्ध है। हर आदमी डॉक्टर है भारत में, और हर आदमी के पास में अपना अपना आइडिया है हर परेशानी को रिजॉल्व करने का। हर समस्या का निदान यहाँ मिल जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में पॉजिटिव एटीट्यूड रिफ्लेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम्स सबको पता है, ग्लूम सबको पता है, लेकिन एनालिटिकल अप्रोच रख करके किसी प्रॉब्लम को न्यूट्रल वे में देखते हुए सॉल्व करना एक अलग अप्रोच है। सो द एवरेज माइंड टॉक्स अबाउट पीपल, बट द ग्रेट माइंड्स टॉक अबाउट आइडियाज. So to write essay in civil services, you have to show that yes, you have great mind, and that should be reflected. And when you only talk about the problems with a sense of nihilism and narcissism, which delves into pessimism, it shows that you are a negative person. If you write something as a problem, the word problem, it will not help you. You should write a challenge, and what steps have been taken and what else can be done. And the approach should be pragmatic. प्रैक्टिकल बताना है। जैसे ट्री कवर कम हो रहा है, क्या प्रैक्टिकल सोल्यूशन है इसका? आरटीआई डाल दें, आरटीआई डालते हैं, डीएफओ का आरटीआई डालो कि आपके एरिया में पिछले 2 सालों में कितने पेड़ काटने की परमिशन दी गई, कितने पेड़ ट्रांसप्लांट किए गए, क्या दिल्ली में जो 80% डीपीटीए एक्ट के अकॉर्डिंग है वो फॉलो किया गया, उनका सर्वाइवल रेट कितना है, कौन से स्पीसीज के पेड़ काटे गए। अभी खड़े खड़े यहाँ पर 50 सवाल बन जाएंगे, लेकिन क्या ये सोल्यूशन है? सोल्यूशन क्या है? एक छोटा सा, हर साल हर आदमी का बर्थडे आता है, अपने बर्थडे पर एक पेड़ लगा लीजिए और उसका 3 साल तक केयर कीजिए। 3 साल में वो इतना बड़ा हो जाएगा कि वो सेल्फ सस्टेन कर लेगा। तो ये एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। दूसरा क्या है? एनर्जी क्राइसिस की हम बात करते हैं। अपने घर में तो पता है कि बिजली का बिल आएगा, पिताजी डांटेंगे, फलाना डांटेंगे, या अपना खुद का भी अगर कमा रहे हैं तो यार बंद कर देते हैं। बहुत देर तक गीज़र चल रहा है तो बंद कर देते हैं कि भाई 5,000 6,000 बिजली का बिल आएगा। तो वहाँ पे हम ध्यान रखते हैं। लेकिन ऑफिसेज में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में वहाँ क्या करते हैं? लाइट जल रही है, हीटर जल रहा है, चले गए। मान लो कि आपको किसी विजिट पे, दौरे पे जाना है, ध्यान नहीं दिए, बंद करके। बंद करना कौन है? और ऑफिस पियून की तो इतनी कोई अकाउंटेबिलिटी है नहीं, वो भी ध्यान नहीं देगा, वो भी चल रहा है हिसाब किताब। तो बिजली का बिल क्या आ रहा है एक ऑफिस का? 3 लाख 4 लाख रुपया। बात पैसे की नहीं है, बात यह है कि उस एनर्जी को जनरेट करने के लिए जितना पीछे फॉसिल फ्यूल, कोल वगैरह बर्न हुआ, वो तो आपके एनवायरनमेंट में ही जा रहा है। तो एक तरह से आप ही तो रिस्पॉन्सिबल हुए। सिमिलरली घर में हम छोटे से एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। डेली ब्रश कर रहे हैं, टैप ऑन है, ठीक है, या शेव कर रहे हैं तो टैप ऑन है, पानी की बर्बादी। दूसरा, एक छोटा सा इस तरह से गोल सा वो एक वो आता है टैप में लगाने के लिए, वो लगा दिया तो उससे क्या है, आपका जो वाटर टैप से निकल रहा है वो कम क्वांटिटी का निकलेगा। सो आई वॉज सरप्राइज व्हेन आई वेंट टू सिंगापुर 3 months अगो। वहाँ पर हमने देखा कि पानी को 100% उन्होंने यूटिलाइज किया हुआ है, और वहाँ टैप को खोलो तो इतना ज़रा सा पानी आता है। मैंने कहा यार ऐसी क्या किल्लत हो गई तुम लोगों को, उन्होंने तो हद ही मचा दी है, मतलब इतना ज़्यादा पानी का कंजर्वेशन है। तो हमारे यहाँ पर नल खोलो तो पूरा एकदम धार सी आने लग जाती। तो यानी कि लेस वाटर कंजम्पशन, एक जो डिवाइसेस हैं जो कि 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये में हम लगा सकते हैं, वो भी हम लगाने की जहमत नहीं उठाते। तो द पॉइंट इज़ कि हम अपने लेवल पर भी बहुत सारे बदलाव कर सकते हैं। अब सफाई की बात करते हैं। चिप्स खाया, फेंक दिया। अब पढ़े लिखे लोग ज़्यादा करते हैं, बल्कि जो लोग रेडी पट्टी में रह रहे हैं वो लोग तो फिर भी अपने एरिया को क्लीन करते हैं, झाड़ू वाड़ू लगा के अपना रख लेते हैं। कार से निकले, शीशा डाउन किया, लो भाई डाउन। किसी भी मेट्रो स्टेशन पे चले जाइए, गंदगी फैली हुई है। बाकी जगहों में बाहर जाके देखिए, या इवन साउथ के स्टेट्स में देखिए कितनी क्लीन एरियाज होते हैं। और आज के नहीं, कई सालों से। तो यहाँ पे हम लोगों की आदत थोड़ी सी खराब हो गई है। तो हम अपने लेवल पर भी बहुत सारे बदलाव कर सकते हैं। अप्रोच प्रैग्मेटिक होना चाहिए।
प्रैक्टिकल होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के कोई सॉल्यूशंस हो, कम्युनिटी सर्विस वाली बात हो, या फिर आपके आस पड़ोस में कुछ एल्डरली कपल रहते हों जिनके बच्चे विदेश में जाके बस गए हों, तो उनसे भी कई बार हम न्यूज़ में पढ़ते हैं ना कि मतलब एक ओल्ड कपल है, उसको मतलब दे मेट विद एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट एंड दे कुड नॉट सर्वाइव, और पता लगा द अदर वन वाज इन सो मच ऑफ मेंटल स्ट्रेस एंड डिप्रेशन दैट ही कुड नॉट गो आउट। बाद में उनके 3 महीने बाद स्केलेटन मिल रहे हैं। तो इसका मतलब कि कम्युनिटी में एक एपैथी है, उन लोगों के बारे में बात नहीं करना या ये सब नहीं करना। तो हम अपने लेवल पर ये सब चीज़ें ठीक कर सकते हैं। तो ये सब प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं। लोकल पुलिस को इन्वॉल्व करके रख सकते हैं, जैसे दिल्ली पुलिस की एक बहुत अच्छी मुहिम थी जहाँ पर उन्होंने एल्डरली कपल के लिए वो स्कीम निकाली थी। उसी तरह से वो यंग गर्ल्स को भी अपना सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते रहते हैं। हिम्मत ऐप वगैरह वगैरह डेवलप किया उन्होंने। तो ये सब प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस इस तरह से रख सकते हैं। दूसरा है प्रॉपर वर्ड्स यूज करना। जैसे जब आप इंडिया में कास्टिज्म की बात करते हैं, इट इज अ वेरी इमोटिव इशू, पीपल गेट ऑफेंडेड। ये बहुत छोटी सी चीज है, हम ये लिखते हैं कि द अपर कास्ट पीपल डू नॉट डू नॉट अंडरस्टैंड द प्लाइट ऑफ द लो कास्ट पीपल। तो यहाँ पर यू हैव एक्चुअली कमिटेड something which is obnoxious, because you believe that there are people who are from upper class and lower class. You should write the so-called upper class people, है ना, and the so-called low class people are equal citizens, ऐसा लिखें। पहली बात, मैंने इसमें किसी को एलिज नहीं किया। दूसरा, द सो कॉल्ड लिखा, मतलब कि आई डू नॉट सब्सक्राइब टू दिस आइडियोलॉजी ऑफ पीपल फ्रॉम हाई कास्ट और लो कास्ट। ओके, so the so called word is important. Similarly, किसी के बारे में अगर बताना है, आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, the word alleged is very very important. The attack on Capitol Hill was allegedly incited by one of the former presidents of the USA. पहली बात, नाम नहीं लिया, कहाँ गया, ठीक है। दूसरी बात, allegedly लिखा, क्यों? प्रूवन नहीं है। कई बार जब प्रूवन नहीं हो तो allegedly वर्ड यूज कर लेना चाहिए। कई बार हम ऐसा यूज कर सकते हैं, some experts opine, या थर्ड फॉर्म में यूज कर सकते हैं, it has been reported that, या it was as per a study it was found, something like that। तो डायरेक्टली अपने ऊपर बर्डन ना लेकर के थर्ड फॉर्म में यूज करते या एलिज्ड वर्ड यूज करके कर सकते हैं। तो ये है प्रॉपर वर्ड्स यूज करना। और एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है विच इज जेंडर न्यूट्रल वर्ड्स। जैसे चेयरपर्सन, जैसे हम यूज करते हैं पर्सन के बारे में बात करें, दैट शी इज अ नाइस पर्सन रादर देन ही इज अ नाइस मैन। जैसे ह्यूमन काइंड यूज करें, मैन काइंड नहीं। तो आजकल जेंडर सेंसिटिविटी बढ़ने की वजह से जेंडर न्यूट्रल टर्म्स को यूज करना चलन में है, यूज करना चाहिए, बहुत हेल्पफुल रहेगा। अभी एक एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, अभी जो एक डेटा प्रोटेक्शन एक्ट बिल आया है, शायद पहले आया था ना, 1-1.5 महीना पहले, वो पूरा जेंडर न्यूट्रल टर्मिनोलॉजी से भरा हुआ है। उसका एक बार ड्राफ्ट को एक बार पढ़िए PRS इंडिया पे, यू विल फाइंड जेंडर न्यूट्रल वर्ड्स देयर। सो it is in common parlance these days. Okay, you should do that. Okay, then comes the third part of, अच्छा इसमें कनेक्ट कैसे करना है एक टॉपिक को दूसरे के साथ में, किस तरह से कोरिलेट करना है, ये हम देखेंगे जब हम अलग अलग टॉपिक्स को अपने क्लासेस में डिस्कस करेंगे। कंक्लूजन किस तरह का होना चाहिए? एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। क्यों? प्रॉब्लम जैसे मैंने बताया, पान के गल्ले पे खड़े हो जाइए या किसी गार्ड से बात कीजिए, उन सबको पूरा दर्शन शास्त्र पता है, उनको पूरा सब कुछ सारा आइडिया है, लेकिन सोल्यूशन नहीं है किसी के पास। और सोल्यूशन ऐसे नहीं है जो कि प्रैक्टिकल हों, कुछ हो सकते हैं
लोगों का अपना एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने भी दुनिया देखी है, उन्हें भी मालूम होता है कि ठीक है कि विमेन सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरा होने चाहिए, सब उन्हें भी मालूम है। मैं उनके नॉलेज को रिडिक्यूल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि वो लोग क्रिटिकल एनालिसिस शायद नहीं कर पाएंगे जो आपको करना है। तो एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रैक्टिकल तरीका है, एग्जामिनर को पढ़ने में उसमें इंटरेस्ट है। सो वेज अहेड जो आप लिखते हैं, एक्शन ओरिएंटेड कंक्लूजन होना चाहिए। इट शुड बी प्रैग्मेटिक, इट शुड बी होलिस्टिक, मतलब इट शुड कवर द होल रेंज ऑफ द टॉपिक्स दैट यू हैव डिस्कस्ड। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा समरी लिखने लग जाएं, उसका शॉर्ट में उसको लिख करके खत्म करें। और इसके साथ में एक मैं चीज और जोड़ देता हूं, स्टार्ट और एंड को कोरिलेट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपने शुरुआत में जो एनेक्डोट एक यंग लायन कब का दिया था एनलाइटमेंट को लेकर के, तो यहाँ पर भी हम कोशिश करें कि वहीं पर आकर के उसको कंक्लूड करें। और सरप्राइजिंगली ये मेरे आई गॉट दिस आइडिया फ्रॉम वन ऑफ माय फ्रेंड्स हु इज एन आईएफएस ऑफिसर राइट नाउ। तो वी वर जस्ट चैटिंग आफ्टर द एग्जाम एंड ही सेड मैंने कंक्लूजन इस तरह से लिखा, ठीक किया? तो मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया तरीका है, मुझे क्या पता था आज मैं क्लास में ये चीज़ बता रहा हूँ। तो उसने कहा कि मैंने जिस कोट से शुरू किया था मैंने उसी कोट पे ख़त्म किया। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये कंप्लीट सर्कल हो गया। लाइफ इज़ लाइक अ कंप्लीट सर्कल, जहाँ से शुरू किया वहीं पे ख़त्म किया। तो आई लाइक दैट आइडिया वेरी मच। तो एंड आई हैव रादर टॉट दिस इन माई क्लास, डिस्कस विद माई स्टूडेंट्स, एंड दे हैव ऑल्सो फॉलोड, मेनी ऑफ देम हैव फॉलोड दैट, एंड दे सेड कि सर हमारा इवैल्यूएशन जो यहाँ पर करते हैं उसमें भी अच्छे रिमार्क्स वगैरह मिले। I feel that it gives an integral view of the essay as such. So with this, we can write a conclusion. Conclusion should be like half a page conclusion, which should show what you have actually understood from the topic. It can also be closed with another quote or with something which is in Sanskrit written in the Roman script, जैसे अभी हमने बताया यत्र नार्यस्ते पूजन्ते। Similarly, you can talk about Vasudhaiva Kutumbakam, etc. Or you can also conclude your essays by referring to sustainable development goals, as the case may be, or using certain adjectives like that XYZ is essential for a rule-based, egalitarian, inclusive and sustainable society, so that the benefits of development accrue to all and sundry. तो यहाँ पर हम टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज इस तरह से यूज करते हुए अपने कंक्लूजन को एंड कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ आई बिलीव वी कैन approach an essay in UPSC with the tools that we have discussed today. During our subsequent classes, we will try to incorporate those in various themes and try to not only discuss the conventional ones but also the abstract ones. खैर ये दो स्नैपशॉट है जो लास्ट ईयर रैंक 1 श्रुति शर्मा एंड 1 ऑल्सो सेलेक्टेड कैंडिडेट, सो उनका ये था. अच्छा हाँ, ये देखिए, ये हमारी क्लास का पहले के उसमें था इम्प्रॉम्प्टू. व्हाट वी डू इज, आई पर्सनली बिलीव दैट once you remember or try to mug up things, it becomes very boring and very burdensome. जब हम किसी चीज़ को याद करने की कोशिश करते हैं ना, वो चीज़ हम भूल जाते हैं 2 दिन बाद. जब हम उसको इंटरेस्ट से देखते हैं, पढ़ते हैं, तो याद रहती हैं. जैसे मूवी देख लेते हैं, 1 साल बाद भी कोई बोलेगा याद रहेगा. अच्छा वहाँ पर तो ये 2 अक्टूबर को पंडित जी गए थे और सत्संग किया था और वहाँ पे पाव भाजी खाई थी, याद रहता है ना, क्योंकि हम उसको बड़े इंटरेस्ट से देखते हैं. वही अगर हम ये बोलते हैं कि नहीं, वो पीरियोडिक टेबल में हमने क्या पढ़ा था, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर उसके बाद याद नहीं है, भूल गए. क्यों? क्योंकि रट लिया, याद करने के मकसद से पढ़ा और कोई लॉजिक या एक्रोनिम नहीं बनाया. Easy said than done, of course, but the issue is whenever you read something, do not
burden your mind in remembering it. You have to cheat your mind. What I used to do was कि मेरे पास जैसे टाइम कम है, मैं क्या करता था कि आई यूज माई लैपटॉप मोर रादर देन स्क्रिबलिंग ऑन पेपर, क्योंकि पेपर कहाँ खो जाए, तो मैं वन नोट में वो चीज़ लिख लेता। जैसे मैं कोई टॉपिक पढ़ रहा हूँ, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, ठीक है, ये कमिटी इतने साल, ये तो मैं अपने दिमाग को बता लेता हूँ, कोई बात नहीं, भूल भी जाऊंगा ना, एक पेज में सब कुछ लिख के रखा हुआ है, एग्जाम के टाइम पे बस ये पढ़ लूंगा और मुझे साल याद आ जाएगा, कौन आदमी था वो याद आ जाएगा, उसने कौन सी मैगजीन लिखी थी वगैरह वगैरह याद आ जाएगा। तो मैंने अपने दिमाग को इसलिए समझाया कि ठीक है, रखा हुआ है, चिंता की बात नहीं, किताब नहीं खोलूंगा मैं ये इसी से देख के पढ़ लूंगा। तो मैंने क्या किया, अपने माइंड को थोड़ा सा काम कर दिया, कंपोज कर दिया कि सब कुछ जस्ट निकाल करके यहाँ रखा हुआ है, याद आ जाएगा टाइम पर। और करते भी वही थे, एग्जाम के टाइम पे इतना टाइम नहीं होता कि सब कुछ पूरा दोबारा पढ़ लें, शॉर्ट नोट्स ही लोग पढ़ते हैं, जो लोग सेलेक्ट होते हैं वो लोग यही पढ़ते ही हैं, तो शॉर्ट नोट से हो जाता है। और उस समय दिमाग भी शांत रहता है और चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए। अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे, 3 घंटे में जितनी चीज़ें याद कर पाए, फिर आपको अगले 4 घंटे में सिर्फ आंखों के सामने से वो अक्षर नजर आएंगे, दिमाग के अंदर कुछ नहीं जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन जीरो हो जाएगा। डोंट बर्डन योर माइंड, just enjoy what you are reading, and trust me, it is such an interesting journey in preparing for this exam. When you come out of this exam, even if you crack it or not, you will come out as a better, more informed and knowledgeable and a wise person. So that is, although बहुत ज़्यादा philosophical aspect है, but the point is you are not going to lose anything by preparing for this exam. Okay, इसी तरह से देखिए क्या होता है। नहीं नहीं, ये अलग है, मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ इसमें। व्हाट आई डू इज कि once you are supposed to write an essay, you go through that topic, identify the keywords there, and on the last page of your answer sheet, do the brainstorming for first 10 or 15 minutes. Do not write a single word. And how to do brainstorming is through such kind of spider diagrams, which you have to ultimately cancel it out. You should not, this is not to be evaluated. It helps you in putting forth all the ideas that are jumbled up in your huge mind with all the studies of all those months together into a single sheet of paper. Even if you forget something, जैसे फेमिनिज्म पे लिख रहे, सब कुछ लिख दिया, फिर याद आया, अरे यार ये मी टू मूवमेंट तो 4th वेव ऑफ फेमिनिज्म था, वो तो हमने लिखा ही नहीं, वो कहाँ पे जोड़ूं, पता चला हमें यहाँ पर जोड़ना चाहिए था। देखिए 3rd तक लिखा है, 4th भूल गए, यहाँ पे जोड़ दिया, यहाँ पे मी टू यहाँ पे आ गया, बाद में जोड़ा हुआ है। और ये लाइव क्लास का ही है, तभी इस तरह की वाहियात सी हैंडराइटिंग में दिख रहा है। तो कई बार हम चीज़ों को भूल जाते हैं, तो जब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं तब क्या कर रहे हैं कि एक बार में सिर्फ विमेन एम्पावरमेंट के बारे में सोच रहे हैं, अच्छा ये एस्पेक्ट वो एस्पेक्ट सब कुछ हमने लिख लिया। फिर जब हम पहले 15 मिनट में जब हमने ये सब लिख लिया, उसके बाद में 1.25 घंटे सिर्फ लिखना है या 1 घंटा सिर्फ लिखना है, ठीक है, तो आपका पहला ऐसे 1.25 घंटे में खत्म। दूसरे में फिर 15 मिनट में आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, और अब की आप अपने ऐसे को 1 घंटे में नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि अब आपके हाथ थक रहे होंगे, पसीना आ रहा होगा और मन भी नहीं कर रहा होता है, लेकिन एग्जाम का है, क्लियर करना है, तो वो प्रेशर भी रहता है, लेकिन दिमाग उतना काम नहीं कर रहा होता है, सोचने के लिए भी ज़्यादा समय चाहिए। तो सेकंड ऐसे को मैं मान लेता हूँ कि 1.25 घंटे में लिखते हैं। तो कितना हो गया, पहले के 15 मिनट प्लस 1 घंटा 1.25 घंटे में हो गया, प्लस 15 minutes and 1 hour 15 minutes. That means still you will have 15 minutes left. In those 15 minutes, what should you do? You should just skim through your essay and try to underline things. So that means the other aspect which you should do is underline. And you can also use some short titles, headings. That is also permissible. 2 or 3 headings in your essay. बहुत ज़्यादा भी नहीं, ठीक है। तो वंस यू, अब देखिए क्या हुआ, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके वो चीज़ याद आई ना, लिख दिया वहाँ पर, पहले तो भूल गए थे क्या बताना है, लेकिन जब ये देखा तो याद आया। वही होता है जब हम किसी टॉपिक के बारे में सोचते हैं, और वो इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं बैक गया, मैंने वहाँ पर लिखा और वापस से अपनी चीज़ पर आ गया। तो यही सेम आपके एग्जाम के दौरान भी होगा, जब आप चीज़ों को भूल रहे होंगे, लेकिन once you write that
draw this spider diagram and cross it out, because it is not to be evaluated. It should be on the last page of your answer sheet, not to be evaluated. Okay, you should write here rough. Okay, no bar charts, flow charts, nothing. Okay, अब जैसे यहाँ पे फेमिनिज्म लिखा हमने, तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन के लिए जो भी लिखा, डेफिनेशन, वेव्स के बारे में, किस तरह के फेमिनिज्म होते हैं, लिबरल, रेडिकल, फिर एम्पावरमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, उसके की एलिमेंट्स क्या होते हैं, वेलफेयर, इक्विटी, एम्पावरमेंट, डायमेंशंस क्या होते हैं, एग्जांपल्स कैसे हैं, चैलेंजेस पेट्रियार्की है, ठीक है, और सिक्योरिटी वगैरह है। फिलॉसफी के बारे में लिखा हमने, तो जॉन स्टुअर्ट मिल्स उन्होंने लिखा, ऑन सब्जुगेशन ऑफ वुमेन के बारे में लिखा, ओलंपे डिगूश, स्वामी विवेकानंद ने भी लिखा हुआ है इनके बारे में, ठीक है। फिर अलग अलग डायमेंशंस, चैलेंजेस क्या हैं, साइकोलॉजिकल, हेल्थ, एनवायरमेंटल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, देखिए यार ना यहाँ पे डोमेन अप्रोच, तो डोमेन अप्रोच हमने यूज किया। फिर उसके बाद क्या स्टेप्स लिए गए, ठीक। अच्छा, प्रोफेसर अमर्त्य सेन का कॉन्फ्लिक्ट मॉडल वगैरह भी हमने कुछ यहाँ इंट्रोड्यूस किया। स्टेप्स टेकन, तो सेवा, एनजीओ में सेवा का एग्जाम्पल दे दिया, यूएन विमेन का एग्जाम्पल दे दिया, कौन कौन सी स्कीम्स हैं, फेमिनिज्म के स्पिल ओवर्स क्या हैं, ह्यूमनिज्म के बारे में हमने बताया, कम्युनिटेरियन फिलॉसफी के बारे में बताया, एजुकेशन, पॉलिटी, सिक्योरिटी के बारे में बताया। फिर उसको LGBTQ के एस्पेक्ट के हिसाब से फेमिनिज्म को जोड़ा, क्योंकि फेमिनिज्म इज नॉट फॉर वुमेन अलोन, इट इज फॉर जेंडर इक्वालिटी। ओके, फिर वेज अहेड एंड कंक्लूजन, राइट। कंक्लूजन में भी हमने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह वगैरह लिखा। अब ये हमारे दिमाग की उपज है, अब वर्ल्ड बैंक से सामने वाला क्या समझेगा, लेकिन मुझे पता है कि मुझे वर्ल्ड बैंक के बारे में, विमेन के रिलेटेड क्या लिखना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में मैंने क्या सोचा होगा कि ओनली 14% ऑफ द विमेन आर पार्लियामेंटेरियंस, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ UN विमेन के हिसाब से, इट विल फर्दर टेक 170 years फॉर ensuring gender equality, which is also reflected in the gender gap index of World Economic Forum। तो इस तरह से हम स्पाइडर डायग्राम बना लेते हैं। ये एक और है, ये क्लाइमेट चेंज पे था, जिसमें बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स हमने कवर किए, हंगर के बारे में, डिस्पैरिटी के बारे में, 1.5 डिग्री, 45%, 2.8, कुछ रहा होगा जो डिस्कशन में आया होगा। एंथ्रोपोजेनिक एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, क्लाइमेट चेंज का हमने एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखा था। कहीं होगा, इसका पॉजिटिव वाला भी होगा। एनवायरमेंटल पोल्यूशन का पॉजिटिव क्या हो सकता है? नहीं वो तो ठीक है। टैंजिबल पॉजिटिव क्या हो सकते हैं? जैसे ये हो सकता है कि आर्कटिक आइस मेल्ट हो जाएगी, तो वहाँ के रिसोर्सेज को हार्नेस किया जा सकता है, प्लस शॉर्टर सी रूट्स कैन बी अवेलेबल, बट दीज आर such small benefits against such humongous challenges and risks associated with climate change। तो यहाँ पर एक कंट्रेरियन व्यू भी दे सकते हैं, लेकिन हम ये लिखेंगे कि ये जो आउटपुट है वो बहुत कम है, इसका जो नेगेटिव फॉल आउट है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये क्लाइमेट चेंज पे था। अच्छा, एक फ्रीडम का भी जोड़ दिया है हमने, मैन इज बॉर्न फ्री बट इज एवरीवेयर इन चेन्स। तो ये इस तरह का क्या फ्रीडम होता है, क्या डायमेंशंस होती हैं अलग अलग एस्पेक्ट में। एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलॉसफी के बारे में, ऑटोनॉमी, कांट्स रैशनल ऑटोनॉमी के बारे में बात किया हुआ है इसमें। हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, सोशल, देखिए यहाँ पर भी देखिए क्या है, डोमेन अप्रोच। तो अभी तक 3 एग्जाम्पल हमने देखे, स्केलेटन वही इंसान वाला है, लेकिन हार्ड मांस अलग अलग चढ़ा दिया है। तो अनरिस्ट्रिक्टेड लाइफ क्या होती है, ठीक है। फिलोसफर्स में जेरेमी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल्स, यूटिलिटेरियन फिलॉसफी के बारे में बताया हुआ है। एक्शन टुवर्ड्स लिबरेशन, ये सब बताया है, इसमें भी फेमिनिज्म, एनवायरमेंटलिज्म, फिर फर्दर रेवोल्यूशन, लेबर मूवमेंट। तो इस तरह से अलग अलग एस्पेक्ट्स को हम उन टूल्स की मदद से डिस्कस करते हैं। अच्छा, मोरालिटी, इस बार मैंने कुछ ज़्यादा ही डाल दिया लगता है ओरिएंटेशन क्लास के लिए। मोरालिटी एंड ड्यूटी, इसमें भी सेम उसी के हिसाब से हमने डिस्कस करने की कोशिश की। यहाँ पर फिलॉसफी पे ज़्यादा किया। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब रिलीजन की बात करें
तो डू नॉट टॉक ओनली अबाउट वन रिलीजन, गिव एग्जाम्पल फ्रॉम एटलीस्ट 2 रिलीजन्स। ठीक है, तो डूज में हम वो जोड़ देंगे, जोड़ देते हैं बल्कि। हाँ हाँ हाँ, ऑफ कोर्स इट इज, और पॉजिटिव, गलत नहीं। नो, नो नेगेटिव एस्पेक्ट्स। Religion is not bad. It is people who have wrong interpretation of religion who are at fault. Religions do not teach anything which is against humanity. ठीक है, तो never be shy in referring to a religion, but do's में और जोड़ देते हैं, at least 2 religions, 2 religions। अच्छा, एक और important aspect बताता हूँ, प्रोटैगनिस्ट के बारे में। चूज योर हीरोज वाइजली। तो जैसे अगर आपको अपना किसी एनेक्डोट से समझाना हो, तो योर प्रोटैगनिस्ट शुड बी राम एंड जॉन, या अली एंड सुखविंदर, है ना, या सलमा एंड सुखविंदर रादर। रीजन कि आपने दोनों जेंडर्स भी बताए, और जो आपके हीरोज हैं या शीरोज हैं वो अलग अलग रिलीजन से आते हैं। ये हमारा कल्चरल डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी दिखाने का भी एक तरीका हो सकता है। इट शोज दैट these people are always in your mind. So once you become an administrator, you will take care of the requirements of people from different sections of society. Although it is a very small aspect which sometimes get overlooked, but आप जब मूवी देखते हैं तब ये चीज़ एकदम निखर के आती है ना, अरे देखो हीरो किसको बनाया है, विलेन किसको बनाया है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चूज योर हीरोज वाइजली। तो मेरा अपना मानना है कि आप अपने प्रोटैगनिस्ट को भी ठीक से चुने। इट्स ऑल अबाउट माइंड गेम्स। जो एग्जामिनर है वो सीनियर पर्सन होंगे, पढ़े लिखे होंगे, वर्ल्ड व्यू उनका होगा, तो वो ये सब चीज़ें कैच कर लेते हैं। हम लोगों को लगेगा अरे यार छोटी सी चीज़ क्या होती है। कई बार तो पेन क्या यूज़ कर रहे हैं वो भी बहुत मैटर करता है, कि उसका इम्प्रिंट पीछे तो नहीं पड़ रहा है। पीछे वाले पेज को पढ़ने में फिर तकलीफ होती है। सीनियर लोग हैं, आंखें कमज़ोर होती हैं, पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो आपको तो भाई उनको तो दिखवाना है ना कि मैं देखो कितना अच्छा लिखा है। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें भी मैटर करती हैं। ओके, तो रिलीजन इन विच कॉन्टेक्स्ट? हाँ हाँ, क्यों नहीं। रिलीजन में सोशल इश्यूज के लिए हम बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे आ, इस समय विमेन एम्पावरमेंट की बात कर लेते हैं। तो अभी हमने वही यत्र नार्यस्य पूजन्ते की बात की, तो वहाँ पर क्या है कि विमेन women are in no sense lesser citizens than men. In fact, even in the Vedic era, um, women were given equal opportunity to develop and were given due respect. The concept of Swayamvar was also a stamp of autonomy to women, or the right of women to choose their life partners. फिर उसके साथ में हम ये एग्जाम्पल्स बता सकते हैं कि ड्यूरिंग दोज टाइम्स 2-3 फेमिनिस्ट का नाम बता सकते हैं हु आर यू नो वेरी लर्नड एंड गार्गी एंड ऑल दीज नेम्स कम टू आवर माइंड। हाँ हाँ, वो तो बाद में, मैं तो वैदिक एरा की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो इस तरह के हम एग्जाम्पल्स बता करके कर सकते हैं। नहीं होगा, कोशिश यही की जाती है कि कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे ऐसे नहीं हो, क्योंकि जनरल टॉपिक्स ज़्यादा रखे जाते हैं। कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे होगा लेकिन वो बहुत बेनाइन तरीके से होगा। कंट्रोवर्शियल तो हम बना देते हैं चीज़ों को। कोशिश करें कि कंट्रोवर्सी से अवॉइड करते हुए चीज़ों को लिखें। ठीक है, वो जीएस में ज़रूर आ सकता है आपका, लेकिन हम्म हम्म
हाँ हाँ, तो ये controversial नहीं है. It is not at all controversial. It is to be logically answered. What were the benefits? What were the apprehensions in the minds of people? And how could they have been resolved? जैसे people needed assurance regarding the that their produce would not be bought by multinational companies at dirt cheap rate. Plus, the they would not lose their land, because that was one of the aspects which was in the minds of people. Then minimum support price was also required by people to be guaranteed, which was not there. So further deliberation was could have been done. So the ideal way could have been that the draft bills could have been put in the public domain for a larger discussion, and accordingly, considering the pros and cons of the various clauses of the of the bills, uh, the necessary amendments could have been done so that larger sections of people could be pacified and given the benefits of the farm laws. इस तरह से कर सकते हैं. तो हमने रखा पॉजिटिव अप्रोच रखा. हम कभी भी सरकार की बुराई नहीं करनी है और कभी भी एक सेक्शन की बात नहीं करनी है. उनके भी अपने एप्रीहेंशन थे, सरकार ने भी अपने कुछ बातें रखी थी. वो इंटरमीडियरीज का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता, उसके लिए एसेंशियल कमोडिटीज़ में भी कुछ चेंजेस उन्होंने किए थे. बहुत सारे अच्छे बदलाव भी थे, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन की वजह से भी चीज़ें नहीं हो पाई. जैसे CAA को लेकर के भी है कन्फ्यूजन है. तो मोर डेलिब्रेशन and acceptance, more deliberation will increase acceptance. Okay, so that is the aspect. So चीज़ें कॉम्प्लेक्स कब बनती हैं? जब डेलिब्रेशन कम होता है. तो इस तरह से आप एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन दे सकते हैं कि हाँ इस तरह से कर सकते हैं. और लोगों को इंफॉर्मेशन दे करके, जैसे हाइजीन, मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में बताने के लिए क्या है, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं, मूवी भी बन गई. तो उससे क्या है, लोगों को उसके बारे में जो हिचक है बोलने में ख़त्म होती है. पहले कौन उसके बारे में बोलता था? तो इससे क्या हुआ, विमेन आर डायरेक्टली बेनिफिटेड. ठीक है, तो चीज़ें कंट्रोवर्शियल बनती हैं जब हम बनाते हैं. चलिए, तो हाँ देखिए, यस ये आ गया ना. आई वॉज सर्चिंग फॉर दिस. यहाँ पर जब हमने ये फ्रीडम वगैरह के बारे में, मोरालिटी, ड्यूटी, ये सब हो गया. फाइनली आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स. कैसे अप्रोच करना है? सम पीपल इन यूट्यूब दे आर आस्किंग द सेम क्वेश्चन. सर इतना सब आपने 3 घंटे से पढ़ा दिया, ये नहीं बता रहे हो कि ऐसे लिखना कैसे है. हाँ, yes, yes, it will be. So identify the keywords first, draw a spider diagram the second, introduction preferably with a quote and anecdote, preferably, okay, preferably, not mandatory. नहीं भी लिखेंगे चलेगा, quote वोट याद नहीं रहता हर आदमी को. Body part with organic approach with stats, reports, various dimensions, no maps, diagrams, bar charts. Keep sentences simple and paragraphs short, but with a disclaimer. Not every essay is perfect. Not every approach is without faults. Okay? Conclusion should be forward looking, pragmatic, and action oriented. Try to end from where you began. Okay? So that is all from my side, and all the best. So I hope it was of some use to you people. बाकी जो classes में हम discuss करेंगे तो वहाँ पर things can be better. So thank you very much for joining, and hope to see you in the subsequent classes. Okay, thank you. Yes.